अगर हम तीन न्यूरोलिंक पे हैं, कॉन्वर्सेशन आपस में कर रहे हैं और डैनी न्यूरोलिंक पे नहीं है, हम कहेंगे अच्छा तुम लोग टेलीपैथी से ही बस बातें करके हंस रहे हैं। टेलीपैथी से बातें पता क्या कर रहे हैं? नहीं और देख पहली शेव थी कोई ग्रेड 10 में। वो तेरी हाँ ब्रो, एक तो क्या तू एफ्रो लेके फिर रहा था? नहीं क्या मुंह पे? अच्छा मुंह की। अबे मुंह की शेव की बात कर रहा हूँ भाई। people think that vasectomy से पता नहीं क्या हो जाए। एक्सप्लेन टू मी व्हाट vasectomy is. यार तू ये चीजें अच्छी करता है, बता यार। अबे यार। बता खान what happened when you got it done? यार जब मैंने करवाया था ना तो उन्होंने कहा कि ये अब आपका उतार के साइड पे रख दिया, तो अब वो पॉडकास्ट करता है लंबे बाल करके। Laundas, awkward moments that only happens with guys. What do you guys think? What is one thing that only guys have? यार easy हो जा bro. इतना direct क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? लड़कियों के पास दिमाग नहीं होता? ये बड़ी बुरी बात है यार। यार ये क्या बातें कर रहे हो? यार पकड़े इसको। पकड़े यार, ये बंदा गलत आदमी है यार। नहीं Don't cancel me. Before you guys cancel me, this was a joke. Yeah. Schlong moments, ये हमारा नया segment है। Schlong moments. Schlong. Short. What is a long at the schlong same- moment? Moments that only people with schlongs go through. understand Oh, okay. यार awkward moment क्या जरा there बचपन is में it's a moment, वैसे awkward moment when the schlong is Schlonging. schlong is elongated when you don't want it to, you know, oh जब when you're जब stuck public in, के you're in अंदर people and School Public के में- अंदर अगर आप if you had an arousal in the public. arousal. अच्छा ये एक second completely तो थोड़ा involuntary होता था before the people. अभी in भी the involuntary होता या flights में है. In a होता way, है? like तुम लोग सुबह के सुबह तो like वो तो साथ- No, that's natural bro. लेकिन तुम लोगों के साथ Jeez, flights serious. में होता है flights में bro. It's the weirdest thing when I sleep now, bro. I sleep and I just have to like sleep with my bag in my lap or some shit, Okay, bro. so I think because- it's more to every do with time the I sleep in public it's with like a pillow here. yeah, I Okay. have to do that. अब मैं सोने लगा। Yeah, What स्कूल में क्या else? करते थे तुम लोग जब ये हो जाता था? bro. या मेरे स्कूल में इस तरह का कभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं हुआ. एक तो फांसी was obviously very फांसी? popular. फांसी फांसी। फांसी क्या होता है? फांसी वो बता यार फांसी क्या होता है bro? strategic ये टर्म Strategic अच्छा तो basically पता पता है है मैं एक एंटी फांसी भी था तरीका. फांसी is like up right, then the anti is like down low. just down low. क्या? Yeah, आएगा but, भी। but हाँ, By the way, I तुम think लोग then you have to like is a little dangerous. यार एक सेकंड मैं तुम Which लोग one? को weird anti फांसी थोड़ा anti फांसी. uncomfortable ज्यादा। Yeah, it's tricky to walk in Yeah. that. because you have to close your legs tight. Yeah, you've done Oh. it. Of course. You know. फांसी and anti फांसी He's also done reverse फांसी। Inverted फांसी। Inverted फांसी। वो ट्राई ना करना, उसमें तकलीफ ज्यादा है. तकलीफ है। यार मैं वैसे एक बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को शायद समझ भी नहीं आ रही होगी हम क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि ये इतनी कोडेड बात हो रही है कि शायद ओनली ये बॉयज अंडरस्टूड सब व्हाट. Yeah. लड़कों को समझ आ गई होगी कि हाँ। फांसी का लड़कों मतलब को क्या है। ज्यादातर, बच्चों ये को आप शायद नहीं अपना आई होगी, schlong लड़कों को आई. Oh, sorry. अच्छा, Yeah. what awkward moments, what other awkward moments only guys, only boys go through? ये टीचर को स्कूल में गलती से मामा कह देना। ओए, ये मैंने किया हाँ, है। वैसे. उसके बाद यार सारी क्लास बस कहती है नहीं, लेकिन ये तुम्हारी अम्मा? मामा है। Oh, sorry. हाँ, मामा कह दिया और सारे अब बस कहते हो ये तुम्हारी मामा है टीचर, और हम कहते हैं "आई यार मुंह से निकल गया था गलती से।" Good यार. तो लोग फिर आगे से कहते हैं अच्छी बात है कभी मुंह से निकला भी है। That's also true. Teacher को But मामा, yeah. teacher को मामा तो नहीं कहा, but I saw this one time. One of my teachers, you know, you can tell when somebody's about to faint. So another friend of mine who was sitting in front of me, वो भागा और भाग के ना उसने जाके गिरती हुई टीचर को पकड़ लिया. Like he quite literally saved her from falling on her head. तो उसने यूं करके पकड़ा और फिर क्योंकि वो बेहोश हो गई तो उसने यूं करके उनको उठा लिया. अब वो प्रिंसिपल ऑफिस में जा रहा है और सारी पूरी क्लास पीछे पीछे जा रही है एक बेहोश टीचर को लेके प्रिंसिपल ऑफिस में. उस मोमेंट के बाद वो दोस्त हीरो हो गया स्कूल का. ओए तूने टीचर को शाहरुख खान की तरह उठाया भाई, तू तो हीरो है हमारा, हीरो है हमारा. बहुत आला। That was a moment. बट ये स्कूल awkward के तो नहीं, ये तो हीरो मोमेंट। नहीं, ये तो हीरो मोमेंट है, मुझे स्कूल से याद आया. What other awkward? मुझे तो Danny, लगता है कि अगर जब तक मैं स्कूल में था, अगर कोई टीचर गिर रही होती मैं उसे उठा ही नहीं सकता था। मैं इतना सा होता था स्कूल में। Maybe it's I think this was easier. like grade- मेरा कौन बड़ा था। this कोई was grade 9.
हाँ So- मैं ग्रेड 9 में मैं 5'1" होता था भाई. हाँ मैं क्या? या मेरी इंस्टेंट ग्रोथ हुई थी. मैं A लेवल के अंदर जब पहुंचा A1 में तो ब्रो आई ग्रू लाइक 6 inches in 1 year. Scott McTominay type. या 5'1" फिर आई थिंक ग्रेड 10 तक मैं 5'3" था या 5'4". उसके बाद फिर एकदम ब्रो. Right now you're 6'1", right? No, I'm 6'1" नहीं हूँ. 6'2". Humble. Yeah, boys, अभी हम awkward moments की बात कर रहे थे ना. हाँ. So I went on a trip down memory lane in my mind. Of remember in 2008, 9, 10 types when you'd be watching cricket with your entire family, and एकदम साथी condoms का ad आ जाता था. और वो No, पूरा bro. खानदान मेरे साथ बस- I've never. What? Someone's looking here, someone's looking there, someone's looking there. I remember it was really awkward when we used to watch like films or TV shows and there was like a kissing scene. Like the whole room would get so awkward. but Like with the- nobody knows what this is. With the kissing scene, you still can see that they're kissing. With like a condom ad, it's You're hearing it. What is this? Why I feel is like this? we've gone backwards that these ads don't come on anymore. Oh yeah, actually, I was gonna ask that I've never seen a condom ad on TV. Yeah, anymore. because they're now moved to social media. Because but I No, haven't but seen don't you think ads that on No, I social think media. they've been majority banned. of the population is on cable, and they should also show them on cable as Yeah, well. 100% because हमारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ये भी एक चीज है. Obviously, लोग तो उनको तो Wait, do you condoms का ही think- नहीं. अच्छा, लोगों को वैसे by the way ज्यादा आवाम को साथी ही पता है. उनको ये भी नहीं by the way पता कि साथी like condom होता है. They affiliate with the. और जैसे जो डिटर्जेंट है उसका वो नाम डल हाँ. हाँ So they इसको उर्दू में क्या कहते हैं कॉन्डम को? shopper. दोबारा another Neuralink moment. another Neuralink moment. bro. Shopper. पता है दोबारा. हिंदी में क्या कहते हैं? क्या? निरोध. निरोध? Nirod. निरोध. I said it easy. Sounds too similar to Maroz. What? Niroz, if you're watching. निरोध निरोध पहन रहा है ना? Niroz, if you're watching, Isn't bro, Nirod a you are proper a Nirod. name in Hindi? Yo, let me know if there are any actually Indian viewers. Let us Nirod know in the कहते comment. Nirod कोई actual Hindi नाम भी है? नहीं. वो विनोद को तुम कंफ्यूज हाँ. कर नहीं रहे नहीं हो. निरोध यार. I've heard it somewhere. फिल्म में किसी का मैंने देखा. निरोध. विनोद खन्ना? विनोद है. और विनोद किसी तो का आप है. विरोध करते हो तो यानी आप उसके अगेंस्ट हो. ठीक है. तो अगर आप किसी चीज के अगेंस्ट और आपने वो चीज रोक लिया तो वो निरोध हो गया. Nice logic, bro. मैं इसके विरोध में हूँ. I love how you have looked up condoms everywhere. No, I watched a film. एक फिल्म है वो फिल्म that film called विनोद villain. Yeah, वो जिसमें है कि मेरा नाम है बुल्ला. The film where you रखता learned about हूँ कुल्ला. कुल्ला. उसका डायलॉग है कि मैं तेरे लिए निरोध बन जाऊंगा. So I was like, no Oh, way. oh, I bro. saw No way. like a. But yeah, anyways, like explanation. But coming back, हाँ, TV पे information definitely. yeah, because people are super awkward. Like I don't understand why people are so awkward to talk about contraceptives. As But like this is why there's so concept. many like myths around all of your like bodily functions. Yeah, that's like true. vasectomy. Like people think that vasectomy से पता नहीं क्या हो जाएगा. Like Explain. I won't. Explain to me what vasectomy is. You don't know what vasectomy? Snip snap. No, I know what, Snip, but snap. just in case nobody knows. I mean, vasectomy is basically. यार तू वो ये चीजें अच्छी करता है. बता हाय यार. अबे यार. मैं Bata आपको Khan, बताऊं. what is what Bata happened when you got it done? वही जवाब बस. हाँ? What happened? What, Basically, यार you. जब मैंने करवाया था ना तो उन्होंने कहा कि ये अब आपका उतार के साइड पर रख दिए तो अब वो पॉडकास्ट करता है लंबे बाल करके. ये है बस. what? गाने भी गा लेता है अक्सर. Anyway, but मैं रोज के साथ. मैं रोज निरोध. जोक मार दिया. पिछली दफा आई थिंक ऑफ कैमरा मारा. हाँ पिछली दफा ऑफ कैमरा था ये शुरू होने से पहले. शुरू होने से पहले बोला अच्छा था. हाँ जी बताइए. But What is vasectomy, vasectomy? vasectomy is when you like cut off the Sperm sperm वाली जो vein होती है. that basically makes you produce a child. Basically जिससे आप fertile होते हो. Yeah. So तो वो उसको vasectomy block is कर for देते हैं. men हाँ Yeah, सिर्फ मर्द vasectomy करा is सकते हैं. like just for men. and it Can it be basically- undone? It can be undone. Yes, they can Achha, so reverse they the tie it. vasectomy. Yeah, yeah. Yeah, that's why there's a Yeah, snap. a lot of men when they've had enough babies and they're like, okay, now we don't want to have any more because we're babies. They just extremely get a They fertile. vasectomy. just want, done. yeah, they just get a, huh? Because the couple is extremely fertile. I हाँ, suppose. ये भी तो होता है. Huh. matlab, yeah. So they just get a or even like some even do it to like enjoy sex without the tension of like, oh shit, like No, but what like if we get a contraceptives are- surprise. I think contraceptives, well, not just a myth, but like another thing about contraceptives is just like that we're gonna wear condoms so
not to reproduce, but it's also really important for you to have protected sex Yeah, to because protect of yourself against like STDs protect yourself and STIs against and exactly all of the different kinds of STDs that they're out there. Yeah, but that is But- for people basically who are Sleeping around a active. lot. Yeah, active with like a lot of people. No, but see, there's Hmm. there's another thing as well. Like for instance, I mean, at times, like for instance, women go through a lot of like UTI as well, Oh yeah. right? Hmm. Men go through it as well. So if in case you're engaged with like one partner, it's just like better to like be protected, because even that can, I don't know. I think it would. Yeah, I've Might read do up something, somewhere 'cause that there's yeah, an that infection also as well, happens. I yeah. saw a TV show called Decoupled. Yeah. It's on Netflix. It's like an Indian TV show. Uske andar bhi like they talk about how unprotected sex can lead to UTIs and yeah. regardless of whether or not somebody has a UTI, it just sort Yeah. of like it's the And even if some they people have it and you germs, plan yeah. on having sex, so of course, like you want to protect yourself. Yeah. from- So the myths in Desi culture about contraceptives revolve like they encompass everything from like losing your fertility to like getting cancer to like using Getting cancer. yeah Getting okay, if you from what? use A condom? contraceptive yeah okay, like if you block something then like वो backtrack होके कोई अच्छा, अजीब सा अंदर कोई जाके कह कोई- देगा, कोई- मैं वापस आ गया "ओए!" जी but that doesn't happen. Yeah, the pull-out method does not always work, guys. I mean, I'm not talking about this from my experience. I'm just like letting you know generally. It's Yeah, better to, I am like, talking about this from my experience because it didn't work, and now this guy is sitting here, just spreading knowledge and misinformation. Didn't work. No. That's. But I think family planning is very important. I think people just family planning is important, Khan. No. I was laughing from my joke. Oh yeah, No, no. 100%. But family family- planning is very important. Like people don't actually value it as But much as it. Again, as like they वो should. last podcast maybe we talked about the Viya chatbot. I think Yes. if only more people had access to it, more people knew about the chatbot, Exactly. then a lot of these misconceptions and myths wouldn't exist because people would then be asking these questions Yeah. to just a bot, like एक chat पे आप बस पूछ रहे हो और वो सवाल. वैसे myths ही debunk कर रहा होता है, by the way. Like I tried having a little bit of a conversation. You had conversation also. with it? With the Viya Just chatbot? like, हाँ, You 'cause I was too. like, bro, what मैंने is check sex? किया You know, like क्या scene है? What is sex? You literally I asked the mean- Viya chatbot, and what did yeah. it say? I'm actually curious. Nothing. It just responded with the definition of what sex is, bro. That's it. Oh, कुछ उसने तस्वीरें नहीं दिखा दी थी मुझे कि ए देखो एंज होता है. so it's like very informative and Yeah, educative yeah, type yeah. तरीका. But yeah, मैंने उसे थोड़ा सा use किया था and it was just like है it's a देखो. very user friendly. सारे ने use किया है. User friendly interface. You just like press options and you whatever you want to learn about, it tells you. And I think it was very like proper information because I cross checked from Google as well, and it was good information. Like it debunked a lot of myths and misconceptions that one may have about. Yeah. For example, one of the myths around using contraceptives is that contraceptives make people sterile, impotent, or cause cancer, as you mentioned, Yeah, which is not true at all. At all. yeah. It I just don't know why you're looking at me while saying that this is not Just true at all. letting you know. yeah. You should. Did use I give the- you? Did I give you this impression? कि मैं सोचता हूँ. Let's get coming. मजाक कर रहा हूँ, क्या हो गया? Let's get Relax. Let's get stopping. Let's get The stopping. possibilities are Sharper. endless with this line. वैसे. Yeah, let's Yeah. get wali na. Let's- Yeah, but I think again like I would want What are you- some of the other myths actually? What? What are some of the other myths? other Where did one. you? काफी होती थी यार बचपन में. When What's that the kid's wildest contraceptive or condom myth you heard in your entire छोटा हो जाएगा. वाकई? तू बता. यार but Right. yeah myths मैंने तो I इसके अलावा अभी स्कूल कुछ तो आपको बॉयज आके बताते थे कि बाय द वे ये होता है और आप कहते थे क्या. काफी मतलब हाँ जलन होती है पता नहीं क्या and then but none of that is true. yeah bro obviously like guys have done this shit ना like अच्छा मुझे ये कभी नहीं समझ आई. I have never understood why boys when they find out about condoms there's a certain group of boys who would go buy it and just test it out alone.
Yeah. So just so I'm assuming that your silence meant that all three of you I thought you are would. those group of boys, bro. I'll tell you something honest. Shall we get reaction? मेरे पास Viya chatbot नहीं था. yeah. मुझे खुद टेस्ट करना था. Yeah, I यार mean, मेरे पास ने किसमें टेस्ट किया था? I Peanut butter tried के but अंदर? I couldn't I didn't get test. my hands on a condom. I told you अच्छा. guys the story कि हमने लिया था. और फिर हाँ, हमने हाँ. बस खोल के देखा. कहता- मतलब उसको टेस्ट इट आउट नहीं किया था. कहता I didn't test. I didn't test. अच्छा बस खोल के as in like you just हाँ. saw what it Yeah. was. Oh, And what did you realize? पकाना है. I realized what function it serves. Very interesting. That's it. Again, I think But I I'm think a yet lot to- of people go through this awkward silence moments in their own lives or having a conversation with another person if they don't actually have the right information. And for that, we have, as we mentioned in the last podcast as well, Yeah. via chatbot who you can speak to about these things if you're Mhm. awkward or if you're misinformed or just generally if you want to know more about your sex life, your health life, family planning, or any question you may have around these concerning topics. I think via chatbot is very important, and we're linking it below. Link डालो. हाँ, link डालो. We're linking it below again Yeah. because a lot of people said it really helped in the last podcast. Oh, Yeah. interesting. Yeah, I think ये तो जरूरी है because if a nation has a certain problem, it's only better to address it. Have you guys ever experienced the awkwardness of first time when you get hair on your legs? या मूछें और बस वो क्लास 5 तक निक्कर पहननी होती थी बीकन हाउस में और मेरे टांगों में बाल आ गए थे और मुझे था यार मैं ये निक्कर पहन के जाऊंगा ये क्या फ्लो गंदा होगा. लगेगा. फिर मैं सॉक्स यहाँ तक लंबी लंबी पहन के आ रहा था. हाँ, और शेव का तो सोच भी नहीं शेव का सकते तो थे ना. हाँ क्योंकि घर वाले बस कह रहे हैं बिल्कुल शर्म नहीं आती करनी है थी. अभी. हाँ, नहीं शर्म भी नहीं. अच्छा एक तो अब मेरी टांगों पे हैं बाल, ठीक है, आप जैसे कि अगर आप देख सकते हैं. I have shaved them once I've also shaved them once. for a Also commercial. once. You can trim For them, a shoot. For a but shoot. you I guys shaved can them in trim school. Don't shave them. In you can grade trim it. 5. मतलब मैंने नहीं. मशीन मारी थी को 4 नंबर. अच्छा, 5 वही नंबर होगा. का. हाँ, मशीन ही मारी थी मगर हाँ. वो वही बात है कि बस वो जिंदगी में एक ही दफा किया था. अच्छा. क्योंकि उसके बाद मुझे अच्छा मेरे बस ना टांगों But पे टांगे बाल है. दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. नहीं, बस टांगों के ऊपर मेरी मतलब बॉडी पे इतने बाल नहीं है. यहाँ पे बस थोड़े से बाल हैं. तो मैंने तो बस जब टांगों के बाल काटे मुझे इतना अजीब लगा कि यार ये क्या हो गया? ये क्या हो गया. बट फिर उसके बाद मुझे अच्छा भी लगा. But I never did it again. I don't know why. Yeah, I've Because you also can't पैंट start चिपकना and don't शुरू हो wear जाती shorts है. anymore. Right? पैंट चिपकना. But But it feels weird against your body. नंगा-नंगा सा feel होता है ये यार. क्या हुआ? और टांगे एकदम बहुत पतली सी हो गई थी. मुझे फील होना शुरू हाँ, हो गई थी कैसे लग रहा था कि ये ये क्या टांगे लड़की छोटी हो गई हैं ब्रो. ये बंदा. क्या? हाँ वो थोड़ी सी जो थी ना मुझे याद है full- मेरी बिल्कुल नई मूछें निकल रही थी and obviously I was developing hair in other parts of my body, so I was like shit, okay, I need to take care of this shit. There's only so long I can use my Dada Abu's razor, right? Used one, by the way. Not new, because obviously आपको you have to deal with situation अच्छा. जो भी है. सही है. तो मैं अपने दोस्त को बुलाया. मैंने कहा यार we have to go to a pharmacy. We went to the pharmacy. I'm hiding behind him and I'm telling him in his ear, यार रेजर बोल दे रेजर. ब्रो मेरी इतनी फट रही थी रेजर Razor बोलते लेते हुए. फिर शेव से एक दफा खत्म करते हैं स्टॉप हाँ. को. How did you guys first like shave? first like First time you big shaved. Bro, first shave तो मेरी जिंदगी कैसे की किसने थी. बताया था कैसे करना When है I was क्या? 5 years old and I took my dad's razor because I would just watch him shave every day. हाँ. और ये मुझे by the way याद नहीं. I vividly just remember my screams only in a car at pitch night. और मैंने अपने अब्बू का बस रेजर लेके तो मैंने शेव मार दिया. और मेरा like my entire cheek was cut and my lips were cut. So the blood wasn't stopping. कुछ नहीं हो रहा था. तेरी full female circumcision हो गई. मतलब I had to be rushed to the hospital. तो काफी crazy था. फिर उसके बाद I think grade 6th is when मेरी मूछें मुझे बहुत annoy कर रही थी. And I had this crush as well. And I was like, bro, I need to like look good. So I shaved my legs as well as my like मेरी जो मूछें थी on the same day. और ये तब था जब मैंने बीकन हाउस वालों को एक एप्लीकेशन लिख के दी कि मेरी टांगों में एक मसला है तो मैं शॉर्ट्स नहीं पहन सकता. Just so I could like hide my hair and they would allow me to wear pants but they didn't. They were like, bro, off. मैंने shave कर दी. बीकन हाउस वालों को लिखी एप्लीकेशन, मेरी टांगों में एक मसला, मैं शॉर्ट्स नहीं पहन सकता. तो उन्होंने एप्लीकेशन पढ़ी, उन्होंने कहा क्या टांगों में मसला है, क्या बहुत छोटी हैं?
कोई मसला नहीं सर आपकी टांगों में. बट मेरी पहली शेव थी जब आई थिंक मेरी पहली शेव थी कोई ग्रेड 10 में. तेरी हाँ ब्रो, एक तो क्या तू एफ्रो लेके फिर रहा था तब? नहीं, क्या मुंह के? अच्छा मुंह की. अबे मुंह की शेव की बात कर रहा हूँ भाई. वही मैं भी तो मुंह और टांगों की बात कर रहा था. अच्छा नहीं, वो बाकी जो बॉडी पार्ट्स की शेव होती वो तो बहुत पहले थी. बट बिकॉज मेरे फेशियल हेयर बड़ा लेट आना शुरू हुआ था, अभी भी पूरा नहीं आता, तो मेरी ना 10 तक ही बस थोड़े थोड़े यहाँ पे बाल आए हुए थे. तो वो बड़े अजीब से गंदे से लगते थे, तो फिर मैंने बस. और अम्मियां इतनी होती थी कि यार नहीं नहीं करना करना, क्योंकि गंदे लग रहे होते थे. पसीना आ रहा है उनके ऊपर. यानी कि हाँ बट आई डोंट नो क्या याद दिला दिया तूने ब्रो. वो पसीना आके ना वो थोड़ी थिक हो जाती है क्योंकि वो जुड़ जाती हैं आपस में. बट क्यों कहते थे नहीं शेव करनी, बस कोई कहते थे नहीं करनी शेव. कहते हैं कि एक पर्टिकुलर एज तक वेट करो, पता नहीं क्या Myth science होती है, इसकी myth होती वजह है. से. हाँ, इससे science ज्यादा कोई आना myth शुरू हो नहीं है, जाएंगे. बस मेरे ये तो है आज कि तक नहीं ये है. myth है. This is a myth. सख्त ये बाल myth आना है. शुरू हो जाएंगे. हाँ ये मिथ हाँ, है. ये myth है. हमारे आज Razor तक से नहीं नहीं है आते. ब्रो. यार देखो, I think it's एक not a देखो myth. No, यहाँ no, पे no, I think it I is a believe myth. it. मिथ, It ये is मैं a आई myth. एक्सप्लेन इट टू यू साइंटिफिकली. देखो यहाँ पे ना बाल नहीं आते. हाँ. यहाँ पे आप जितना मर्जी रेजर मारोगे वो वही बाल आएगा जो यहाँ पे नेचुरली आता है, पतले वाला बाल. अच्छा. वो उसका आगे से मुंह कट के वो बाल का जो मुंह जब कटेगा तो वो बाल आपको मोटा फील होगा, बट वो पीछे से पतला बाल ही है. जब वो बाल पूरा अपनी लाइफ स्पैन खत्म करके गिर जाएगा तो जो नीचे से बाल निकलेगा वो एग्जैक्ट वही बाल पता नहीं निकलेगा. क्या साइंटिफिक कह के यूं कह के चीजें सिखा हाँ, रहा है. समझ नहीं पता है कौन मुझे सी भी आदतें आगे दिखा से वो रहा है मोटा हो brother. जाएगा, पीछे से वो पतला रहेगा. नो बट लाइक Let it grow out, it will be in its natural क्योंकि देखो ना condition मेरी again. दाढ़ी अब इतनी ये मेरी कम आती दाढ़ी, पैचेस हैं. मैं जितना मर्जी रेजर मारूं वो ऐसे ही तेरी रहेगी. साइंस बेसिकली है कि जब तुम यहाँ के भी बाल हाँ, genetics नहीं करते By हो, the way, जिन तो लोगों को वो भी ऐसे ही आते हैं. फेशियल हाँ. हेयर का मसला होता है, they can use different products. For example, एक तो है ना वो सुइयों वाला, वो क्या है? Microneedling. Micro needling. Micro needling. How's बट that? उससे Heard, डेंजर्स भी हैं उसके. Acha, I don't know about the What is dangers. You can micro needle your face and it'll actually help you grow a proper beard. वो स्किन फंक्शन को एनहांस करता है बेसिकली. या Hmm. मैंने कराया हुआ है कोई एक इस वक्त एक दफा वैसे एक जितने मैंने ना Did it छोटा help? छोटा माइक्रो नीडलिंग नहीं, वो थोड़ा सा ना आपके इंजेक्शन के साथ बिल्कुल सरफेस पे कोई सब्सटेंस जो है वो इंजेक्ट करते हैं, उससे आपकी हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है. मैंने एक दफा कराया था, उससे मेरी एक्चुअली काफी बेहतर हो गई थी. Is it like पीआरपी PRP? टाइप नहीं, Yeah. पता नहीं कोई डिफरेंट था, आई डोंट फॉरगॉटन द नेम. पीआरपी तो आपके खून से प्लाज्मा निकालते हैं. हाँ, PRP वो और वापस होती है. inject करते हैं. खैर इस वक्त वैसे सब वो बॉयज जो फुल मूछे रख के बैठे कह रहे हैं क्या ये इसके अलावा तो वैसे इनकी निकल ही नहीं रही. प्रिटी बॉयज तीन अच्छा, पता ना boys, क्या पता ना ये? जेनेटिकली लोगों की मूछें अब कम क्यों हो रही हैं, पता ना? क्योंकि ओवर टाइम एक सेकंड की कम पहले हो रही स्टार्ट कर, क्या मतलब जेनेटिकली लोगों की मूछें कम हो रही हैं? हाँ, जेनेटिकली वी आर बेसिकली हमारा बॉडीली हेयर और फेशियल हेयर कम हो रहा है, और उसकी वजह यह है कि एवोल्यूशन जैसे जैसे हो Oh, रही है हाँ, ना. are you हाँ. talking about that thing where they say कि you don't need hair basically? हाँ, अब कि सर पे भी eventually बाल खत्म हो protection के जाएंगे लिए नहीं है because you आपको don't need जरूरत. hair. अबे हमें Humans बाल don't- की जरूरत yeah. नहीं है. पहले हमें बालों की जरूरत होती थी टू कीप अस सेफ फ्रॉम इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया Yeah. The sun. एंड द सन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, क्योंकि वो इंसान को बाल बॉडी पे Bro, आते थे. Evolutionary और speaking. जो एरिया ज्यादा सेंसिटिव हैं, जैसे कि हमारी क्रॉच, उधर ज्यादा बाल आते थे और मुंह पे ज्यादा बाल आते थे. अब क्योंकि ओवर टाइम हम वो हो चुके हैं, क्या उसे कहते हैं, ओवर टाइम हम Rules. डोमेस्टिकेट होते जा रहे हैं, हम कपड़े पहनते हैं तो बाल यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो बाल आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं. तो इट्स नॉट अ साइन ऑफ मैस्कुलिनिटी, इट्स एक्चुअली अ साइन ऑफ दैट वी पीपल विद लेस फेशियल हेयर कम फ्रॉम a longer More line of advanced. civilized people rather than not masculine enough people. हम बस ज्यादा पहले civilized Sorry, हो गए bro. थे हमारे पुरख. नहीं, और- I'm extremely hairy. हाँ, I'm not. he's a hairy मेरी टांगे बहुत हेरी हैं. मेरी टांगे hairy. मेरी भी और टांगे उसके अलावा नहीं। एक उसके चीज़। अलावा I'm just मतलब like, मेरे जो अबाव अजदाद थे उन्होंने शर्टा बना ली सन, पैंटा नहीं सन बना. तो वो बाल इधर वाले बाल अभी भी आते हैं. क्यों? शर्म कच्चे ने आती बिल्कुल नहीं थी. बनाए ऐसे। ऊपर वाली शर्म आती थी. कच्चे नहीं बनाए सर. अच्छा, Protect the chest. वो गोलमाल में कहता है ना, गोलमाल में कहता है कि वो कहता है क्या शेव कर रहा हूँ, कहते हैं क्या पूरे चेहरे पे बाल आते हैं. कमाल है, लोगों को कहाँ कहाँ बाल आते हैं. बाल आते हैं. नहीं, that is true. बट लोगों की कुछ लेकिन देखे- evolution wise, अगर आप वैसे इसको break down करो तो eventually you're not even going to need your body. I mean, the most important organ in your body is your brain. अगर if you somehow, Yeah, that's as soon as you're born, you take out that's the brain technology ना. successfully and you put it inside of a robot's body, that would solve every single problem. क्योंकि तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है, टूट गया, okay, replace with new hand. Just like अगर तुम्हारे phone का charger टूट गया,
replace the जिस charger. तरह अभी Neuralink भी आ गया. जिस तरह Neuralink आ गया. हाँ. Yeah. Neuralink की वो- क्या वो- testing हुई? I haven't read up on it. They've tested it on people who I think उनका first phase के अंदर it's not like normal human beings. It's people who are like already it's Special. like हाँ, Special needs. like how Stephen Hawking was. You know, उसका जो case था. Elon Musk just said like something like, you know, it's like Stephen Hawking in today's day and age having the ability to Speak you know, and like walk. speak and yeah. To those who are confused, well, Neuralink is a chip that goes inside of your brain that Yeah. helps you with your. अगर आप blind हो, it can actually fix your blindness. अगर आप वो deaf थोड़ा हो, step that is a step further away. अभी के लिए Neuralink is just a device that can connect to your brain and let you control electronic devices yeah, with your whatever you thoughts. think, हाँ. it's gonna make यानी it अगर happen. जो quite neuro- literally telepathy. हाँ telepathy With के- your device, हाँ, basically. basically ये device है ना, इसमें भी Neuralink है, मेरे दिमाग में भी Neuralink है, तो मैं सोचूंगा कि अच्छा यार WhatsApp दानियाल को खोलो। गालियों वाला भरा मैसेज कर दो हाँ। तो वो चला जाएगा मैसेज. हाँ, लेकिन and अगर मेरे पापा पास भी भी दोनों के Neuralink हो, है और हाँ? तेरे पास भी हम Neuralink दोनों के हो है, तो हम एक्चुअली कम्युनिकेट भी कर कर सकते हैं. without क्योंकि actually तू कहेगा saying a खाकान word. को ये वॉइस मैसेज भेज दो, मेरे But दिमाग में also, प्ले हो I जाएगा. feel like Neuralink is very important with the way AI and AGI is being developed at the rate What is that it's being. AGI? So AI is basically Artificial artificial intelligence. intelligence. AGI is sentient. It can think for itself. Oh, अच्छा. it can- Sentient. Good. It Hmm. can think for itself. It can make decisions that are not propagated by us, that are not controlled by us, neither Okay. they are demanded by us. Okay. So they can do shit on their own with But their do own they brain. do they do that collecting your data the way you do things and then form their own intelligence? Yeah. Yeah, Is it yeah. like that- yeah, वो so तो I AI suppose- भी वैसे ही काम करता So I suppose that's how the all AI systems are trained. Yeah. कि आप you take like a bunch of data and you feed it to AI. Yeah. So what you learned in 100 years, they can basically repeat the data and go back to human history since I think like Egyptians ke paas chale jao and they can feed everything, human mannerism, blah blah blah, everything. And the AI can form opinions and thoughts based on the experiences that we experience. यार बेसिकली आई विल एक्सप्लेन इट टू यू लाइक दिस. मैं अगर तुम्हें अभी 2+2 करने को कहता हूँ तो तुम फौरन सोच लेते हो 4. जो तुमने कैलकुलेट करने की स्पीड की है ना, वो तुम्हारे दिमाग में बेसिकली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल गया है ना, Yeah. उस स्पीड से डिटरमिन होता है. Hmm. तो उसकी स्पीड है शायद 326 माइल्स पर सेकेंड. Hmm. इस तरह की कोई स्पीड है कि Miles per second माइल्स है? पर सेकेंड. बायोलॉजिकली इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे दिमाग में कितनी स्पीड पे ट्रैवल करता है. No, it travels at the speed of light. नो नो नो, वो एआई के अंदर करता है ना. तो बेसिकली जिस तरह कॉपर वायर्स के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक सर्टेन स्पीड से ट्रैवल करता है, उस Yeah. तरह जो हमारे दिमाग के अंदर वायरिंग है उसकी भी एक सर्टेन स्पीड है. मगर जब एआई कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को स्पीड ऑफ लाइट पे आपस में रीड करता है. बेसिकली एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में, यानी एक जो भी वो हाँ. इलेक्ट्रिकल Yeah, इक्विपमेंट yeah, से yeah. दूसरे से, ट्रांसमीटर से दूसरे में, वो इसलिए स्पीड ऑफ लाइट से प्रोसेस करता है क्योंकि जो कनेक्शंस हैं वो ऑप्टिकल वायर के अंदर हुए हुए हैं और उसकी कम्युनिकेशन लाइट के थ्रू होती है, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू नहीं होती. तो वो इतना तेज प्रोसेस कर लेता है इन्फॉर्मेशन को कि अगर उस समय जिस तरह कैलकुलेटर को आप कहते हो 9990999 टाइम्स इतना तो वो फौरन बताता है बिकॉज वो स्पीड ऑफ लाइट पे उसको कैलकुलेट कर लेता है. उसी तरह एआई जो है वो स्मार्टली सोचता है. तो अगर एआई को अगर जब एआई ट्रूली मास्टर हो जाएगी और एआई एक्चुअली 1 और 0 में नहीं सोच सकेगा बिकॉज दैट इज बेसिकली हाउ कंप्यूटर्स थिंक. Yeah, 1 0 1 0 1 0 कोड होता है. yeah, yeah, 1 इज ऑन 0 इज ऑफ, Yeah. या फिर अदर वे अराउंड Hmm. कि लाइट जल रही है तो 1, ऑफ है तो Off 0. at the zero. तो वो इतनी देर लाइट ब्लिंक करके वो एक Hmm. कोड लिखता है और उस कोड को फिर वो अल्फाबेट बनाता है और फिर उस तरह वो एआई पढ़ता है. जिस दिन हमने क्वांटम कंप्यूटिंग के थ्रू 1010 से निकल के एक्चुअल थॉट के अंदर कंप्यूटिंग करना शुरू कर दिया, जिस तरह मुझे 1010 नहीं करना पड़ता, मैं तुम्हें कहता हूँ हाथी, तो तुम्हारे जहन में हाथी आ जाता है. जैसे ही जिस दिन एआई इस तरह पहुंच गई तो एआई जो है वो ह्यूमन एडवांसमेंट और बेसिकली टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है, जो हम शायद 10 लाख करोड़ साल में करते, वो 1 सेकंड में कर लेगा. हम उसे कहेंगे वर्ल्ड हंगर सॉल्व करो, तो वो एकदम से सोच लेगा कि वर्ल्ड हंगर किस तरह सॉल्व होगी, क्योंकि वो स्पीड ऑफ लाइट पे प्रोसेस करेगा Yeah. तो उसके इंफॉर्मेशन. लिए उनको क्वांटम फिजिक्स बेसिकली क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग और फिजिक्स जो है वो Yeah. मास्टर करनी I पड़ेगी. think we're हमें. talking about the subject matter that we don't have full knowledge of. हाँ, So let's इतना see. नहीं पता. नहीं, but No, but पर I understand. ये जो मैंने most बात of the बोली things ये that- एग्जैक्ट Yes, yes, you उस are दिन right. एआई But मास्टर we're, हो To we're my stepping understanding- into also like a situation where it's not just about like calculations and whatnot. It's also about like creation to the point where even in terms of like, I mean, the world is headed to a place where everyone's going to turn into being a creator.
मूवी बनानी है 2 साल बाद या साल बाद क्या होगा, यू जस्ट गिव अ प्रॉम्प्ट टू द एआई कि गिव मी दिस सीन, ये कैरेक्टर है, इसने ये करना है, ये करना है, ये करना है, and instead of you having to like take a camera and go and set up a whole thing and shoot something, you can just give a command and an entire scene is just going to formulate in front of you. Yeah. Same thing is It's happening. gonna be very with music as interesting. well. कुछ और सोच लेते हैं So, करने The का. new No, world but then that It's we're going to be a living in world is of gonna- creators, bro. No, but like then creativity won't be valued as much as it is valued right now. Here's the thing though, जब तू बच्चा था, right? तू अभी अगर मैं तुझे कहूँ गाना बना, तो तू बना सकेगा? बना लूंगा. कैसे बनाएगा भाई? ये वो वाला गाना ही बनाना, भीगा आसमां शैदाई दिल मेरा सुनी राहों पे. No, like point being कि तू गाना सुन सकता है ना, और तुझे गाने अच्छे लगते हैं, right? So you have the innate ability to perceive art. Anyone who has any innate ability to perceive art has the innate ability to also create it. ठीक है? Problem is talent एक जगह है, but another problem is resource. अगर kindergarten के अंदर किताबों की जगह तेरे सामने पियानो और माइक रख दिया जाता, you could have been someone today who could have had the ability to produce and create music. Now you say, यार मुझे नहीं पता ये सॉफ्टवेयर किस तरह क्या करना है, क्या होगा. Now comes an AI to which you just have to give a command. Now because you have the power innately to perceive and receive music and enjoy it, you have the innate ability to be everyone's a creative at the end of the day. And basically So you'll be able to Shabir, tell it कि मुझे बिली आइलिश की तरह की बीट बना दो जिस पे वोकल लाना डेल रे का हो और Shabir, ऐसे also lyrics हो. keep in mind that if these tools are available, basically, so I can't make Pulp Fiction. You will always need a Quentin Tarantino to tell an AI how to make Pulp Fiction. What kind of emotion to give the actors that the AI generates. What kind of lenses to use and what kind of shot to use in a certain situation. So that artist, the human mind will always be necessary. For Yeah. now at least. No, For no, now, for now. forever. No. Plus the AI Forever. will only I think The you guys reason are is, the undermining reason the is scene. there is some intricacy, ठीक है? There is some emotion, ठीक है? That the computers just can't have. You हाँ, there is some form of a human This imperfection. is where The it thing gets is- tricky ना. जो quantum physics वाला AI हो, जो quantum computing 1010 वाला AI हो, जो 1010 में नहीं पे नहीं सोचेगा, हाँ, हाँ. वो शायद फिर they'll be more human, maybe more human than us. Look, the thing They'll is maybe understand emotions better than humans exactly, do. exactly my That's point. the Exactly scary my bit. point. But maybe We we're don't not even- meant to understand every single emotion. Huh? That's what makes life. If we understood every single emotion, we wouldn't have any तुम्हें पता problem है, ever. there's a very famous, who said this? Maybe Carl Sagan said this, but like there's a very famous quote by, I think Carl Sagan or Neil deGrasse Tyson, I'm not sure. But the quote is, the first aliens that will visit us will not be biological. They will be computers. If we're Yeah. visited by aliens, Yeah. they'll be artificial intelligence. Neil deGrasse Tyson said, if we ever get visited by aliens, run. Yeah, 100%. Because if they're अच्छा, able वैसे- to visit us, वैसे एक bro, second, you are hold on, done. hold on, Yeah, hold You on. are done. Yeah, yeah. Imagine like aliens just walked into this room right now or just appeared. First of all, how do you know that we haven't been visited by aliens? we Let's have. start there. I think good we have, यार bro. हम इस side of the podcast I'm पे pretty- आ गए हैं. I'm Let's pretty go, sure- Joe Rogan. Bro, 100. यार एक सेकंड, दुनिया कितनी बड़ी है. Again, I will quote the great Kanye West and say, we are a blip in the universe. Yeah, Pale blue dot. Thaka दुनिया कितनी connected बड़ी है. हो Do you जाएगा. really think we're the only beings out here? तू मुझे खुद बता. You no, tell no, me. दुनिया नहीं, No, मतलब no, universe कितनी universe बड़ी है. कितनी बड़ी है. Sorry, but वही देखो, यार, नहीं, वही गाल. I don't कायनात. think, नहीं, I don't think we're the only ones. I 100% believe there are aliens. Yeah, There's no doubt about yeah, it. 100%. If we were visited by them, is debatable. I don't believe it. यार मैं तुम्हें एक बात बताऊं, कभी कभी ना वैसे ह्यूमन हिस्ट्री उठा के देखो ब्रो, हमारी जो रिटन हिस्ट्री जब से स्टार्ट हुई है ना, वो लाइक 5000 साल पहले आप फॉलो अप कर सकते हो. हाँ, 5000 साल पहले भी जितनी हमें मिली आपने है. पहली दफा ना नहीं, नहीं, ये sir, हाँ, आपने drawings बनाई थी calligraphy 5000 आपने साल देखी पहले. थी, आप ड्रॉ करना शुरू हो गए थे, विच इज अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज दैट यू नो के ये लोग बॉयज आपस में बात करते थे, दे कम्युनिकेटेड सम सॉर्ट ऑफ अ थिंग एंड दे स्टार्टेड ड्राइंग, राइट. उससे पहले 2 लाख साल पुरानी ह्यूमन मॉडर्न डे ह्यूमन होमो सेपियन हिस्ट्री
is in the dark. We don't know what went Hmm. through. Obviously, there was some sort of a evolution that was going through. There must be a language, but they hadn't. There was some sort they of didn't. destruction that made sure कि वो Sure. चीजें आपको Graham नहीं मिलें। Hancock Simple को सुना language, किसी ने? simple यार, languages उसकी होंगे. वो Yes. documentary- उसकी podcast देखिए. बहुत crazy पॉडकास्ट है वो। देखिए जो हाँ, रोगन हाँ, वाली, जी। जिसमें वो कहता है कि वो 12,000 साल पहले एक आइस Flood. एज और फ्लड टाइप Yes. सिचुएशन थी, ठीक है, Yes. और और वो तब सारी human- नोआज आर्क को भी हाँ, बीच में वो connect बेसिकली करता कहता है कि चीज़ हर कल्चर के अंदर ग्रेट फ्लड की स्टोरी एग्जिस्ट Story करती है। है, और हर डिफरेंट कल्चर्स दैट हैव नथिंग Similar religions stories and हैं of cultures. people coming हाँ, and अच्छा, teaching viewers को- them अच्छा how- नहीं, दरमियान से ना शुरू अच्छा, करो, sorry, शुरू से yeah. हम अपने व्यूअर्स को भी बताते हैं ना। हम्म। वो कहता है कि हर अक्रॉस एवरी कल्चर, जिन कल्चर्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं था, साउथ अमेरिका के अंदर अमेज़न रेन फॉरेस्ट के अंदर जो कल्चर थे, एज़टेक्स का कोई ताल्लुक नहीं था हमारी इंडियन हमारी, सिविलाइजेशन yeah, से। इन दोनों कल्चर्स के अंदर ग्रेट फ्लड्स की जो मिसाल है वो एग्जिस्ट करती है, कि ग्रेट मिथ एग्जिस्ट करती है कि ग्रेट फ्लड आया था। वो कहता है कि 12,000 साल पहले इंसानों की पूरी सिविलाइजेशन एक ग्रेट फ्लड में तबाह हो गई थी, और उसके बाद उसमें से कुछ लोग बचे थे जिन्होंने दुनिया को दोबारा रीसिविलाइज किया था, और उन्होंने शिप्स में इधर उधर जाके लोगों को नॉलेज और सिविलाइजेशन बनाने की बेसिकली चीजें सिखाई थी, फार्मिंग सिखाई थी और ब्ला ब्ला ब्ला। क्योंकि उस फ्लड के बाद जो सारे लोग थे इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो दे वर रॉक्ड बैक इनटू द स्टोन एज। स्टोन एज। तो ये लोग, Stone Age से भी और पीछे बैठे हर हैं। कल्चर के अंदर यही स्टोरी है कि there were men who came on boats हाँ। and taught them how to yeah. be modern और again. और आपको वो जो ग्रेट फ्लड का ना क्या कहते हैं, जियोलॉजिकल एविडेंस भी एग्जिस्ट करता है, जो कि है कि ग्रेट फ्लड आया था एक, ठीक है, 12,000 साल पहले दुनिया का जो क्लाइमेट है वो एक्सट्रीमली ज्यादा, मतलब उसके अंदर आपको वेरिएशन नजर आ रही है कि यहाँ चेंजेस आए हैं, और ऑल्सो जियोलॉजिकली आपको वो नजर आता है। ज्यादातर जियोलॉजिकल जो हमारी मेन स्ट्रीम है वो डिनाई करती है ग्राहम हैनकॉक की चीजों को, मगर 90s के अंदर ग्राहम हैनकॉक को बिल्कुल ही लूनेटिक कहा जाता था। अब उसकी बहुत ज्यादा बातें जो है वो प्रूव होना शुरू हो क्योंकि गई हैं। डिस्कवरीज होना शुरू हो गई हैं। डिस्कवरीज होना शुरू हो गई हुई है। अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर, अमेज़न रेन फॉरेस्ट की डेप्थ्स के अंदर, उन लोगों का जिनका दुनिया से कभी कोई ताल्लुक वास्ता नहीं रहा, उसके अंदर एबोरिजिनल डीएनए नजर आता है आपको। एबोरिजिनल डीएनए उन लोगों का डीएनए जो ऑस्ट्रेलिया के लोग थे, ठीक है। पॉइंट ये है कि ये दोनों सिविलाइजेशंस का आपस में कभी कोई जोड़ नहीं रहा। कभी ये जो गोरे भी इधर उधर गए हैं, दीज वो सारी वो वाली सिविलाइजेशंस जिनको अनटच्ड सिविलाइजेशंस कहा जाता है। तो देयर वाज सम सॉर्ट ऑफ ट्रैवलिंग हैपनिंग बैक एंड फोर्थ, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स हैपनिंग बैक इन द डे, जो लॉस्ट नॉलेज है हमारी सिविलाइजेशन का। और वो ये भी आर्ग्यू करता है कि ग्रेट पिरामिड्स जो हैं वो एंशिएंट इजिप्शियंस ने नहीं बनाए थे, वो उनसे बहुत पहले पुराने हैं। उनको मिले थे, क्योंकि वो जो उसके अंदर भी पूरी, They आप अगर वो inherited it. पॉडकास्ट देख ले ग्राहम हैनकॉक का, वो हमसे तो you बहुत बेहतर है। understand that like हाँ, हमने Also, दाना there's डाल like दिया, वो देख civilizations that लेना। have been made like within like the realms of like the earth, which have no way of knowing कि ये इंसानों ने उस time पे, considering the knowledge that existed, how was it possible for humans to like do So this? Neil entire deGrasse thing? Tyson actually points out a really important topic, a fact. Hmm. He goes like, how can you say, this is our ego speaking actually, that we are the most knowledgeable? How do you know that there were not more knowledgeable and more advanced civilizations that pre-existed? The time that we have lost completely. Maybe they're buried like 200 kilometers below your surface. But that And मजे they, की and बात they go बताऊं like, एक and और। they go like, okay, then why are the only buildings to survive for the last 5,000 years are pyramids? Why are there no other buildings? yeah, but it's And he goes and he says that is because the way pyramid is shaped, even if it's to break, it'll still look like a pyramid. Yeah. However, every single other building that we have right now, for example, if you go to Singapore, Toronto, or New York, every single building that you see, it'll flatten zero to the ground in 5,000 years from now. Also- However, the pyramid will remain in the pyramid. So how do you know that there were not any other buildings present 5,000 years ago? Maybe all you see is what survived. और pyramids पता ना पहले they were covered with white stone and the top They- was gold. yeah. वो तो it got वो- stolen, yeah, जो yeah. test of time नहीं stand कर लेकिन सका। see, the thing is, But what don't do you you think that's interesting? what do you define as knowledge in this? See, when he says that, how do we know we were the most knowledgeable or not? उसके अंदर एक और factor भी तो Because ये है ना कि we still don't know how to build something like we but we do- know how to but we Sure, went we to the do. moon. Yeah, of course. If So we the did. technology So could maybe have been we did. very So maybe developed we in a did. very different way. हमारी That's technology, also a, So maybe that's we also a thing. don't. Some वो बहुत Obviously. lunatic बात है। चांद पे गए हुए हैं हम। Obviously. Of course. हाँ, we went to the moon. Wag the dog देखी है तूने? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग ये pyramids वाली बात। Do you know what structure dethroned the pyramids to be the tallest man-made structure?
like pyramids, tallest Oh man-made yeah, structure Eiffel थे. Tower. हाँ, Eiffel Tower बना था जो पिरामिड से ऊंचा था, उससे पहले कुछ नहीं था. 5000 साल का रिकॉर्ड है. हाँ, और नहीं उससे भी शायद ज्यादा. आईफल टावर तो अभी बना है यार. Yeah. और उसने डिथ्रोन किया था, उससे पहले That सबसे is ऊंचे crazy. वही थे यार. और कोई वो भी नहीं है, आपको अभी तक कोई प्रॉपर फैक्ट नहीं मिला जिससे आप कहो कि ये बेरियल साइट्स हैं, बिकॉज आज तक कभी कोई मम्मी नहीं मिली वहां पे. मम्मीज नहीं मिले, Yes. बॉडीज नहीं मिली है. नहीं, जो वो कहते हैं ना कि ये इस फेरो के या उस फेरो का वो था, हाँ, नहीं, burial mummies site मिलती थी. हैं. But they've अभी never found a recently- burial chamber for any अभी of भी these kings. So recently chamber burial है, King's chamber Chamber and Queen's Chamber inside of the pyramids of Giza. However, there are no bodies in there, is what Yeah. he's saying. Maybe they're I don't stolen like because it. bodies usually back in the days they were buried with a lot of gold and a lot of jewels. हाँ. So maybe they were stolen. और Who पता है वो knows? पिरामिड्स के ऊपर चढ़ना मना है. हाँ. पहले So, अलाउड होता था. people parachute down No, but on top of them. पहले अलाउड होता था. Yeah, ग्रैहम हैनकॉक गया है. yeah, yeah. यार, yeah. So उनकी जो गवर्नमेंट है वो बहुत Bro, वो secretive बहुत है ex है about boy, the यार. pyramids. हाँ, there वो was- अच्छा, लोगों को यार, हम explore लोग नहीं पता नहीं करते. कहाँ निकल गए हैं. मैं बात कर रहा था AGI की. हाँ. The point I was making about the human history of being 5,000 years is that all that we know, all that we have learned is actually, although came after the Industrial Revolution when we really invented the computer, हम लोग की ग्राफ यूं ऊपर गई है knowledge और smartness की overall. अभी this is the first couple of years of AI as we know it. Yeah. And it is already smarter than you. The point, It's changed the game the for point, everything. the point No, is, no, AI is not smarter than humans right now. No. of course it is. No. Of course no, it is. नहीं, smarter than the average human maybe. But you can't say an AI is smarter than... Okay, smarter than an average human because it can get shit done and deliver results quickly. No, because it's right? because Because it no, it depends on can't the think data on that its you. own. Because Yeah, it now, has and it such a depends big on the That's database. what you're First- feeding it as well, no? So look. So that is what I'm pointing out. Let's say AI becomes sentient. It develops a consciousness. It knows what it's doing. It makes its own decisions. It replicates into it Zima creates Blue. more AIs. He's Pull basically the talking plug. about Becomes a Zima thing. Blue. Zima, oh, अच्छा है ना? ठीक है. It becomes a thing on its own that is Yeah. doing shit on its own. Shout out Black Love Mirror. Death Oh, Love, Robots Death का and episode Robots. Love, Death, Zima Robots. Blue. Zima अच्छा, Blue. Zima Blue Netflix पे आप देख लें. कौन सी Yeah. वाली एपिसोड? वो ये है ना जिसके अंदर Blue the- वो पेंट करता है. blue वाला. he's talking about the exact same thing. हाँ. वो एक AI होता है, AGI होता है जिसकी अपनी consciousness आ जाती है, फिर उसकी progression वो लोग दिखाते हैं. But carry on. So Go we on. have no idea what's going to happen in 50 years from now. And that is why you need to power your brain with stuff like Neuralink. Although I'm not going to ever be the first one to test it out. Oh, 100%. But I think it's things moving the right direction because you're going to need a power up. Achha, you're gonna get a Neuralink? Yeah, eventually everybody's going to need a Neuralink. Are you? yeah. are you First gonna get a Neuralink? person to live 150 years has already been born. Oh yeah, that's true as well. You gonna get it? I will get it. 100%. I Bro, think eventually we'll all be asked getting you, those things. if I asked you, would you own a cell phone 20 years ago, you'd think about it. But if I asked you right now, you No, wouldn't even if think you, about if you tell me that there's a cell phone that is a completely different matlab Danny, physical thing that I will hold in my hands to like communicate with the world and everything. So that's Danny, a different. do you wanna stay young for a little longer? I Danny, do you think- not want to be stupid anymore? Yeah, bro. You know what I mean? Because No. you will Yeah, be living in a world, Achha, everybody is communicating Danny, without ये speaking. बड़ा मजे का है. Do you all- wanna do you हाँ. wanna think music? Do you wanna see, do you wanna translate the music नहीं, you're लेकिन thinking onto हमें लगेगा the अगर computer? मैं अगर हम बताता हूँ. 3 न्यूरोलिंक पे हैं और हम लोग कॉन्वर्सेशन आपस में कर रहे हैं और डैनी हरामी न्यूरोलिंक पे नहीं है, हम कहेंगे what the fuck is No, wrong अच्छा with yeah. this तुम I guy? can imagine a Like, why conversation is मैं he बस not देख रहा हूँ तुम लोगों को और तुम लोग टेलीपैथी से ही बस बातें करते हो हाँ, जैसे गालियाँ हंस निकाल रहे हैं, के हंस रहे हैं, नहीं, की तरह हंस yeah, रहे no, हैं। अच्छा call me Telepathy से call बातें me पता क्या call- कर रहे हैं? नहीं और देख यूं ही रहे हैं बस देख सिर्फ यूं ही रहे हैं कुछ चेंज नहीं हो रहा बस देख ही जा रहे ये तो हम अभी भी करते हैं वैसे. You know what would be the most confusing would be just look at Danny and just be like, या नहीं see call me like old school or whatever लेकिन this reminds me of that scene in Troy मैं बात where Brad Pitt says to इन्हीं ब्लेडर ने ਤੁਹਾਡੇ where Brad Pitt says this to this girl, Briseis इस तरह कुछ करके उसका नाम होता है. She really like, you know, like worships the gods and stuff. तो वो उसको कहता है कि let me tell you a secret about God. The gods, they envy us. They envy us because we are never going to be alive forever and we're going to be in this moment as we are.
and you will never be as beautiful as you are in this moment, and we will never be here ever again. So I think that there's There's the beauty. human- There's beauty there's to time. to time, and there's beauty to moments and experiences you have. And it's fine if I can get the gift of like you said, "Ki bro, would you want to think in music?" It makes me think like I'm very curious to see कि मेरा दिमाग कैसे operate करेगा for sure. But I already think in music in a human form the way I've naturally been blessed with it. 5,000 साल पहले मैं जाता हूँ, एक बंदे की ना नजर कमजोर है, मैं उसे कहते हैं यार एनक चाहिए, वो कहेगा 100% चाहिए, bro. 100% हाँ, चाहिए. अच्छा, see. ठीक है, अब न्यूरोलिंक एनक है हमारी फ्यूचर की, और वो इस तरह हमारी एनक है फ्यूचर की क्योंकि न्यूरोलिंक जो है मे बी मेरे बॉडी को सिग्नल दे सकता है कि यार ये जो आपकी बॉडी दर्द कर रही है ना, ये दर्द थोड़ी देर के लिए रोक लो, मेरी बॉडी को हील होने दो. न्यूरोलिंक आपको बायोलॉजिकली मेडिकली बहुत फायदे देगा. हाँ, now this is something different. If there's a way that you can program your Neuralink that क्या है मेरा hypochondria fix कर दे भाई, मेरे दिल के अगर मसले हैं या कुछ है, please इसको easy करा दे. लोगों को सुनाई नहीं दे रहा है. Emotionally कैसे help करेगा आपको? Emotionally? Emotions are in the brain too. It can actually technically help you. For example, तुम्हारा heart break हुआ, you can just turn off your emotions. This will be a breakthrough. That would be next level. But but that takes away from the beauty of living life, bro. इसको और amplify करो. You're supposed to go through this shit. I think I do understand. This is a good argument. It takes away from the beauty of living life. But understand, bro, depression leads to suicides. No, but there's Imagine what a breakthrough it happiness would be. without sadness. There's no light without darkness. No, but so you don't even know the but value of those things. But understand, depression is not sadness. Yeah, na. depression is a disease of the brain where happiness can't enter your brain. I am saying कि अगर न्यूरोलिंक आपके डिप्रेशन वाले इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को कंट्रोल कर दे, तो ब्रो ब्रेक थ्रू है आपके लिए, it's like, mental okay, health के लिए. Let's say you've been going for therapy for 2, 3, 4 years. It's only getting worse. There's no fix of the world in the world as you know it, and nothing worked. No relationship, no therapy, nothing. If there's that option, I would definitely. If I love someone, I'd be like, bro, get a Neuralink. Listen, people with paralysis. Yeah. ठीक है, उनके बेसिकली पैरालिसिस, अगर आपके कुछ न्यूरॉन्स यहाँ पे खराब हो जाए या बैक में कोई मतलब वो स्पाइनल कॉर्ड का मसला हो जाए, तो आपकी बॉडी पैरालाइज हो जाती है. इफ न्यूरोलिंक कैन फिक्स दैट, I am all down for that. Breakthrough and like insane human. I may not like elongate my life, but I may like use it for like. अपनी यहाँ जिंदगी लंबी करने वाले, ये वैसे डिबेट मजे किया. Would you want to live for 200 years? Look, limited time, yes. If you give If me, I have the money to live for 200 years, then you'd definitely. obviously have money. Like obviously, like, but you know, मेरी what do you मिलने wake up लगी in the morning? केड़े ड्रामे कर रहे हैं बुड्ढा. पर हाँ नहीं ब्रो, बहुत मजा है 200 साल. There's too much to live Yeah. for. In 200 years, I could experience so many But you things know, that I I'll would tell you never that be if able to you're in 80. 200 years old, then 100 would be the new 40, Yeah. Yeah. right? Yeah. Yeah. So if you think about it for a second, बड़ा टाइम आ जाए भाई. बहुत time आ जाए, आप lazy हो जाओगे intrinsically. True, but humans used to live for an average 40 years, 100, 200 years back. That's because other humans would kill them. No, or disease disease would kill them. disease would kill them. Disease as well. Yeah. But has it slowed down humans? If anything, in the Antibiotics कब हुए थे जान? antibiotics, bro, ना in 20th century की पैदाइश है. नहीं 20th. हाँ, late 1800s या early 1900s की अच्छा, पैदाइश है okay, हाँ, antibiotics. 20th 200 साल पहले आपको टटियां लग जाती थी ना. तो आप मर तो जाते थे. आप Dysentery से लोग मर जाते Diarrhea थे, would bro. be a death डायरिया sentence, से मर right? जाते थे. Diarrhea, dysentery. But my point being, Can you imagine? bro, medical. पेट खराब हुआ. Thousands of years Yeah, of that's- advancement, My and this great is the grandfather perfect died time. from diarrhea. Oh, I'm sorry. Can we तुम लोग undo मजाक it? उड़ा रहे हैं. ये रिवर्स कर देते हैं ना. ये रिवर्स कर देते तू हैं. ऐसे क्यों बोल रहा है यार? क्या? Sorry यार. गलत बात है यार. Sorry. यार. चलो यार, एटलीस्ट उनने खाना तो अच्छा खाया. नहीं. मैं तुझे कहने का I don't know how he died. रिवर्स कर देती हैं ब्रो. Bro. जिम कैरी की तरह. Yes, हाँ? नहीं पर देखा, but this is, I hate this about modern day culture. What अगर मेरे के- ग्रेट ग्रैंडफादर डायरिया से मरे होते तो तुम तूने लोग बड़ी बैठे जल्दी मजाक बता इस दिया, चीज का मैं उड़ा रहे हो. joke मारने क्या लगा. So फर्क you पड़ता get है? sensitive about नहीं it. क्योंकि हाँ, तू why should I get sensitive यार I about don't it? care about your great grandfather. I care about you. तू sad हो रहा था ना, तो मैंने But कहा मैं कि क्यों यार, सैड हो रहा हूँ? मेरा सैड होना थोड़ा सा irrational नहीं लग रहा. नहीं Bro, लगा. it अच्छा, doesn't rational matter. है. It doesn't matter. It फिर doesn't ना matter. उड़ाना, It's your मजाक क्यों feelings. कैसल में मरे थे. अच्छा, हाँ. तेरे ग्रेट ग्रैंडफादर मरे थे असली में. जाहिर है अभी तक जिंदा होते जाहिर सी तो बात है एक ना. गेम है वो, तो फिर न्यूरोलिंक पे जिंदा होते भाई. Boys,
यार पाकिस्तान की बेहतरी की बात करनी है. तुम लोगों को क्या लगता है कि पाकिस्तान किधर जा रहा है? पाकिस्तान क्या लेफ्ट जा रहा है, राइट जा रहा है, सीधा जा रहा है? तुमको क्या लगता है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है. ओह, नहीं. Bro, यार ये बताओ क्या पाकिस्तान की प्रॉब्लम. बात कर रहे हैं. मैं तो वो डायलॉग कर I रहा था, know, I वो know. प्यार का पंचनामा क्या का. आप पॉलिटिकली पूछ रहे हैं? नहीं क्या पॉलिटिकली मतलब? नहीं यार. क्योंकि उसमें पॉलिटिक्स तो चेंज होती everything रहती है. is going जब wrong. मैं 10 साल का था तो मैंने 9 PM न्यूज पे सुना कि पाकिस्तान तारीख के बड़े नाजुक मोड़ से गुजरा है. शहजाद रॉय. हाँ, नहीं, but this is so true. जब फिर मैं 20 साल का हुआ, मैंने सुना पाकिस्तान तारीख के बड़े एक नाजुक मोड़ से गुजरा है. और अब मैं फिर सुन रहा हूँ पाकिस्तान अब मैं तारीख के 35 अच्छा साल ये नहीं का बोला जब मैं 30 साल का हुआ हूँ अभी तो- हुआ नहीं ना भाई, 30 का है भी बोल दूं. बट तू खुद देख ब्रो Yeah. कि Script बचपन- changes. No, players change. Script stays the same. Hmm. ओए. AI ने लिखी हुई है. Deep thoughts. होप आता है जाता है लेकिन हम constantly backwards. Bro, this is backwards like जा an रहे हैं. intrinsic core issue of our society, bro. It's just Hmm. the way you I think think is it and you operate. is it the elite capture, would you call it, or is it more on the people? Define elite capture. So elite capture का मतलब ये है कि No. there's a मतलब मैं कह रहा हूँ कि for the sake of this और conversation. तू what मैंने you- पढ़ा देना मैं if I नहीं, okay. well what I mean is do you think it's the responsible class is all of us, the 99.999% of the Pakistani people, or is it the 0.0001% of the elites who actually capture Pakistan? यार वो शहजाद रॉय के गाने में वो कहता ना, अपने उल्लू कितने टेढ़े अब तक हुए न सीधे, अपने उल्लू गोरे गोरे वो यहीं पे हैं गोरे गोरे. दिस इज वेरी डीप लाइन कि गोरे यहीं वो पे हैं. यहीं पे हैं अभी तक. Oh, हाँ, गाने में कहता ओ कि अब हमारे उल्लू गोरे हैं ना, और वो अभी तक यहीं और अभी तक सीधे नहीं. interesting. समझने वाला समझ जाए. बहुत आला यार. मेरे अच्छा मैं ज़्यादा I put the blame On the people. in the more so in the basket of the people, the majority. No, but how can you blame somebody who's Who like doesn't a group have- of people that has never been given access to education or like enlightenment? How do you blame them? You wouldn't blame a child कि वो तुम्हें नहीं पता कि स्टॉक मार्केट किस तरह चलती है. जाहिर है उसे क्यों पता होगा? Especially when they're part of an entire system through which they've like Yeah. grown up, learned everything. लेकिन इंसानियत भी I think मतलब एक I think those system are पे technicalities, relation- यार but इंसानियत होती है system पे इंसानियत- based. हमने इंसानियत सीखी है. सीखती हाँ you learn Hmm. इंसानियत ना, that's the thing. So when you learn इंसानियत यार through how इधर से आपको बताता हूँ, जब मैं होता था ना 10 साल का, Hmm. तो मैं कहता था हाँ हमारी इंडिया से जंग होगी ना तो हमारा एक फौजी उनके 4 मारेगा, क्योंकि मुसलमान फौजी जो है वो 4 हिंदू फौजियों के बराबर होता है. फिर मैं जब बड़ा हुआ तो मैंने रियलाइज किया कि एक सेकंड, मुसलमान और हिंदू में कोई बड़ा छोटा तो नहीं होता. हमारे यहाँ पे भी हिंदू लोग रहते हैं. बाद में मेरी बातचीत भी हुई हिंदू लोगों से, मैंने देखा यार ये तो मतलब इंसान ही है. और फिर मैंने ये चीज अनलर्न कर दी. फिर मैं और बड़ा हुआ, फिर मैंने देखा कि यार पॉलिटिक्स जो है उससे हेट तो नहीं जुड़नी चाहिए. पॉलिटिक्स मतलब इश्यूज के ऊपर होती है. किसी के स्किन की वजह से या किसी के मजहब की वजह से या ये चीजें आप वक्त के साथ सीखी. तो मैंने इंसानियत सीखी. बचपन में जो मुझे वो पढ़ाया जा रहा था सबक, वो भी मैंने सीखा. तो इंसानियत और सिस्टम और ये सब चीजें आप बड़े होके सीखते हो. अपनी मिसाल ले लो भाई. लेकिन as a तुम product भी of तो your आर्मी ब्रैट हो. तुम भी बचपन में सोचते होगे कि जंग होगी तो हमें एटम बम मार देना चाहिए. Which is a very stupid thought to have. एटम बम की That's दुनिया also- में कहीं नहीं चलना चाहिए. That's also nuclear because weapons. आपकी जो आप इंसानियत सीख रहे होते हो या पता whatever नहीं you're कि मेरे learning. आर्मी ब्रैट होने से इसका क्या ताल्लुक था. नहीं बट लाइक मैं कह रहा हूँ कि फौजियों में तो ज्यादा लाइक फौजी के बच्चों में ज्यादा एक होता है ना नेशनलिज्म. हाँ. मैं तो मतलब नॉर्मल बच्चा होके मैं कहता था कि हम जंग होगी तो हम खा जाएंगे. नहीं लेकिन मैं लड़ने जाऊंगा all border of पे. ये सारी जो understandings हैं, they're also a product of your environment, the environment where you are growing up, जहाँ पे ये sentiments हाँ. तुमने, whether it's movies, whether it's music, whether it's people in your house, your family, your teachers, your friends even. Like for instance, in grade 2 or 3, my class fellow, we had a Christian boy in our class, Jeremiah. He was my best friend in school.
a few other kids made it their point from grade 2, 3, 4 till 5 at least कि हमने इसको convert करके मुसलमान बनाना है. which is very Which is weird. yeah. इतने छोटे- So yeah. So क्या अगर मैं if I was a product of a poor upbringing or a neglected or ignorant upbringing, तो तू भी उन्हीं तो boys मैं के साथ उनमें होता. मैं उनके साथ मिल जाता and I would not have gone to like his Christmas parties that he only 2-3 people would show up at the Christmas parties he would throw, bro, because the rest of the class would be like यहाँ नहीं जाना चाहिए. This is somewhat of a mass level impression that people in Pakistan जब- have, जब bro. मैं So था ना मैं जब 3rd grade में था ना शावीर, जब मैं 3rd grade में था तो मेरे क्लास में एक बच्चा मेरे साथ एक आई थिंक पहली दफा बैठा होगा, तो मुझे किसी दूसरे बच्चे ने बोला इससे बात ना करना, ये शिया है. मुझे पता नहीं था शिया क्या होता है. तो मैंने घर आके मामा से पूछा शिया क्या होता है. वो बच्चा मेरी क्लास में एक शिया है. तो उन्होंने कहा बेटा कुछ नहीं होता. तो मैंने कहा क्या मतलब. वो कहते हैं वो बस डिफरेंट, वो मुसलमान ही होता है और वो डिफरेंट होता है. तो अगर हिंदू भी होता तो मसला तो नहीं होना था. तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्कूल के अंदर हाँ. और सिस्टम और आप bro, ये देखो. देहातों के स्कूल तो नहीं थे. हाँ, ये These are शहरों के schools स्कूल in- थे. Look, guys, cities. the point I was making, the point I'm still making is that I do understand the responsibility of education lies with the government, obviously, With right? the state. With the state. In every country, they're responsible for making sure that the population is educated. However, on an individual level, I do consider the responsibility lies within yourself. That's what I believe in. No, you're right. I think the reason why we are here is because of the poor decisions our parents' generation took. It brought us here. If somebody from then stood up against the fascism, so to speak, we wouldn't be here. Are we standing up against fascism? No, that's the point. And that is the point. So we're That repeating I the do mistakes. I think that if you act like a sheep, you'll be treated like one. That's the point I'm making. So it is a conundrum in a way. Yeah, my problem is na, pata hai kya? Like we're just going in circles नहीं, saying that no, it's but their पता है- responsibility. There's no, there's तुम्हें their पता है- responsibility and Do nobody's you know fixing why it's nothing. going in circles? This is another phenomenon that I've noticed. जिस रियासत ने आपको कुछ दिया नहीं ना होता, उस रियासत के लिए आप जान भी नहीं कुर्बान करते. जब आपको अपनी मिट्टी से प्यार तब होता है जब मिट्टी ने आपको कुछ दिया हो. जब आपकी मिट्टी ने आपको कुछ दिया नहीं होता तो क्यों कोई जाके मरेगा सड़क पे रियासत के लिए. बचपन में याद करो, जब कभी भी बॉर्डर टेंशंस होती थी, यू वुड सी एवरीबडी गो लाइक कि हम लेट जाएंगे टैंकों के आगे. पूछो किसी से, अब लेटता कोई? क्योंकि पिछले 20-25 साल के अंदर लोगों के अंदर एक सेंटिमेंट डेवलप हो चुका है कि हमारी रियासत ने हमें दिया क्या है भाई. तो ओवर टाइम एक ये सिलसिला चलता जा रहा है और इट्स ओनली गोना गेट वर्स. We need to sort out our economy and we need to sort out our system where people aren't treated like dirt. रग के नीचे नहीं करना चाहिए. Do you लोगों को. also feel that in this entire time, this is perhaps specifically talking about the past 2, 3, 5, or maybe 10 years, up until the last decade is also where the people of Pakistan have stood up the most to No, step up against. but this that's entire- because of उससे social पहले हमने media. विटनेस नहीं किया वो. नहीं बट उससे पहले कैसे करते ना बात का, उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलती. सोशल मीडिया आया तो इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी फ्री हुई. Yeah. अभी सोशल मीडिया के होते हुए आप देखो कितनी फ्री है इन्फॉर्मेशन. एंड देन टेल मी लाइक यू राइट नाउ गूगल हिंदुस्तान टाइम्स, यू कांट ओपन हिंदुस्तान टाइम्स. आप नहीं पढ़ सकते उनकी खबरें क्योंकि ब्लॉक्ड है वो साइट. तो खैर. इन्फॉर्मेशन फ्री होने के बाद भी अभी हम 10 साल में यहाँ पहुंचे हैं. उससे पहले तो इंटरनेट ही नहीं था, But- इन्फॉर्मेशन ही फ्री But नहीं थी. Shavi, individualistic responsibility, what you're talking about, is a fact. That is true. When each individual of this country, when they are mentally at a level where they can understand what problems we have, the economic problems we have, the political issues we have, etc., then obviously the issue is solved, right? Because those people are able to think about all of these problems and come up with a debate to solve them. The issue is when it's an entire generation, majority of which has grown up with the education system, with the system upon which even societal cultures have been passed down, even cultural पूरी जो चीजें आई हैं सारी, जो फॉर्मेशन एक दिमाग की हुई है, उस चीज के तहत वो मेजॉरिटी
उस पॉइंट पे है ही नहीं जिस पे तू कह सकता है कि अच्छा, यार तो मैं एक और चीज़ फिर बताता भी एक तुम्हारी एक चीज़- इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ. So I है. understand what you're saying. हाँ. Of course I understand. I'm not Despite talking you about not getting that, you still should have somehow had the. Daniel, मैं intellectual intelligence की बात नहीं कर रहा था. मैं बात कर रहा हूँ भूख लगती है, दर्द होता है, कोई मारता है. मैं बेसिक ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स वो की एग्जिस्ट बात नहीं कर रहा करती हूँ. भाई, करती हैं, नहीं करती. करती हैं. लोग डरते हैं. तू नहीं समझ नहीं, नहीं वो रहा. वो नर्चर करती से हैं. आती हैं, वो नेचर से नहीं आती. नहीं. नेचर से सिर्फ भूख, सेक्स और नींद आती है भाई. I हाँ. believe people know the problem. I believe people know this, the idea. People have an idea of the solution as well. What वो I वही think बात होगी ना is, जो वो कह रहा है, जब आपको धरती से अच्छा, प्यार ही नहीं है, जब आप हाँ. कहते No, हो no, no, कि no, मुझे क्यों? क्या दिया अपने इसने. आप से तो प्यार है ना. अबे नहीं, अब ये यार भी तो पिछले देखो ना. 2 सालों में देख अच्छा, कितने लोग चले गए. वही यार लोग मुझे थे ना जो hope एक्सट्रीमली नजर आ- प्रिविलेज थे. हाँ. कितने लोग बाहर चले गए. वो प्रिविलेज लोग थे, उनको वो लोग थे जिनको एजुकेशन मिली, और और मैं वो उनको लोग थे blame जिनके नहीं पास Bro, talk पैसा to था. university students उन्होंने right कहा, now. "Fuck They all this, want to we're leave going." Pakistan. Of course मैं अच्छा, उनको blame अब नहीं देखो करता. मैं They- मैं नहीं you know, करता. I'm not उनको one of blame those who नहीं- are blaming. मैं कह अच्छा. रहा हूँ कि this is अच्छा, मैं But- अपने अंदर वाली भी बात बताता हूँ. अब मैं बताता हूँ, मुझे एग्जैक्टली पता है प्रॉब्लम क्या है, मुझे पता है प्रॉब्लम क्या कॉज हो रही है. मगर ब्रो, जो बंदा इस लेवल पे सोचता है ना, वो एक और चीज भी सोचता है. और वो ये सोचता है कि यार मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे घर वालों पे है, मैंने इनके साथ रहना है. और ऐसा नहीं है कि सारी दुनिया डेमोक्रेसी पे चल रही है भाई. इजराइल इज नॉट अ डेमोक्रेटिक स्टेट. उनकी इकोनॉमी देखो China जाके. is not. China Saudi is Arabia not is an not. Dubai is not. तो प्रॉब्लम डेमोक्रेसी के एग्जिस्ट करने में या ना करने में नहीं है. प्रॉब्लम ये है कि भाई जो भी एग्जिस्ट करता है ना, वो हमारी स्टेट लेवल फंक्शनिंग को तबाह करता है. द प्रॉब्लम इज आपका स्टेट फंक्शन और आपके इकोनॉमी ये सब चीजें सही रहे ना. आई वुड नॉट केयर if I'm living in a democracy or if I'm living in a theocracy or if I'm living in If like a you're happy, dictatorship. if you're well educated, well fed, if you're taken care of, you wouldn't care what हाँ. system you fall under. Yeah. That's what I'm Like, saying. I'd But argue, if you're living under a regime of fascism, for example, hypothetically bro, speaking, and you fascism क्या don't होता है stand यार? up, and you don't stand up. Every country in the world has some form of fascism. USA में fascism नहीं है क्या? USA के अंदर क्या true form of democracy? I don't think नहीं. so. Ideally, true form of democracy होनी चाहिए. मगर जिन मुल्कों में नहीं है, उधर अगर बेसिक ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं ना, गुआंतानामो बे कहाँ एग्जिस्ट करता है? यूएसए में एग्जिस्ट करता है. क्या वो फैशिज्म नहीं है? हाँ, वो फैशिज्म है. क्या दुनिया में सबसे ज्यादा वॉर्स कौन वेज करता है? यूएसए वेज करता है. क्या वो फैशिज्म नहीं है? हाँ, वो है. क्या सिर्फ रशियन फैशिज्म और चाइनीज फैशिज्म रह गया दुनिया में हेट करने के लिए? Democracies can also be fascist. Democracies can also be problematic. I just want to live in a country that has a functioning economy, that where human lives and human dignity is protected, and I am good. I don't care about anything else. And I think everybody in the country just wants that. Huh, I do agree with you. Yeah. I do agree Yeah. with But you. emotions take over and हाँ, मतलब मैं यहाँ बोलूँ, like, And bro, we- I love Imran and Khan. we He's a say great guy. things that we shouldn't say, just like what he said right now. Like Shabir, देख रहा है, इमरान No, खान I mean, great I आदमी agree है. with him, हर bro. चीज इमरान It's- खान great आदमी है, हर चीज फिट है. ब्रो, नवाज शरीफ फिट आदमी है, ग्रेट है, हर चीज फिट है. बिलावल भुट्टो फिट आदमी है, हर चीज ग्रेट है. एस्टेब्लिशमेंट फिट लोग हैं, हर चीज ग्रेट है. मगर इनमें से कौन भाई सड़क पे चलते हुए बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा? मुझे वो दिखाओ. कौन उसको इनमें- मैं support कौन करना educate शुरू हो जाऊंगा. करेगा? अगर मैं सड़क पे जाके मर जाता, अगर मुझे लगता है इन चारों में से कोई भी उस सड़क के बच्चे को बचा रहा है और उसे कोई बचाने नहीं दे रहा, आस्क योरसेल्फ ऑनेस्टली, दिल में यहाँ पे, क्या इनमें से किसी के लिए भी आप मरने के लिए तैयार हैं? अगर दिल से आवाज आती है ना, हाँ, तो जाए मर जाए यार. मैं नहीं हूं. मैं सिर्फ अपने घर वालों के लिए सड़क पे जाके मर सकता हूँ, उसके अलावा किसी के लिए नहीं. and Fair by the enough. way, even this school of आगे बढ़ो, thought, boys. even this school of thought, Hmm. if every single person has that, would pretty much like Solve a lot of solve things. a lot of things, bro. क्योंकि लोग यहाँ पे ब्रो, सबको ये सोचना चाहिए कि इंसान जो है ना, एट द एंड ऑफ द डे, इसका मैं यहाँ से काटूंगा, इसका भी खून निकलेगा. ये सुन्नी हो, शिया हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, ये इजराइल से हो, इंडिया से हो, कहीं से भी हो, इसका यहाँ से खून निकलेगा. इसे अपने बच्चे की परवाह होगी, इसके माँ बाप को इसकी परवाह होगी. सिर्फ ये इंसानियत सिखानी है आपने, और आपका मुल्क ठीक हो जाएगा. आपने ये इंसानियत नहीं सिखाई. जिस दिन सिर्फ ये इंसानियत आ गई ना कि यार उसका भी घर है, उसका भी बाल बच्चे हैं, वो भी वही चाहता है जो मैं चाहता हूँ. कहते हैं ना कि किसी भूखे से पूछा कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो, तो उसने कहा यार मैं भूखा हूँ. ये सिखाने की आपको जरूरत है मैस लेवल पे. हमारे मुल्क ने यहाँ फेल कर दिया. Wait, हमारे that's मुल्क which ने is why I सिर्फ was saying divide सिखाया है. that हाँ, thing that you're divide- talking about ना कि बने individual divide level and पे rule क्या करना. है. If you have not been given all of this to take from and learn from, then you don't necessarily have any means to, like, you know, think of any solution, think of any way where
what do I do to like fix my country, my soil? How do I give back? What do I do? It starts from literally just inculcating good values in people and learning to grow up to be a good human being. Sir, हमारा That's the मुल्क first and absolutely. foremost thing. I've हमारा also मुल्क started आपको पता है, thinking like I've शबीर, also started thinking like कि यानी कि overprotective nationalism is also not a great idea. हाँ, horrible idea. हाँ, bro. For example कि मैं मेरी country best है क्योंकि मैं पैदा हुआ था इसमें. या तो मुझे एक सिंपल चीज का जवाब दे, ठीक है? होती है लोगों में और बहुत अच्छी चीज है, मैं उसको वो नहीं नहीं कह रहा होनी, कि गंदी अच्छी चीज है, नहीं है। लेकिन at the same time I feel like it limits your mindset. Of Bro, course limits it your does, bro. imagination. Limits आपको your पता ही नहीं, humanitarianism आपको also. पता ही नहीं आप अपने इस बॉर्डर के अंदर रह के आपको पता ही नहीं आप मिस क्या कर रहे हो. Best form, Islamically, Plus आप Islamically एक- speaking as एक well, लोगों there को is- एक और सारे और लोगों से ऊपर रख देते हो. हाँ, यार best form of patriotism is criticism. True. आप अपने True. मुल्क की बुराइयां बताओ, आपसे भी ताकि वो बड़ा fix हो मुल्क का सके. Bro, प्यार just like करने your वाला कोई best नहीं है. friend is not someone who's going to be your yes man. It's someone who's going to give you constructive criticism at Yeah. everything Yeah. that you do. I don't want people who are like, oh, बहुत आला बहुत. I want people who are like, bro, ये कर. Bro, तू मुझे एक simple चीज का जवाब दे. क्या तुझे लगता है कि पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे if you are going up, people around you are going to be happy for you or No. sad for you? sad for तू मुझे बता. sad for themselves. People around me. Yeah. No, I mean, not, अच्छा, society, मुआशरा. Yeah. हाँ, मुआशरा तो सारा एक दूसरे ਨੂੰ ਥੱਲੇ हाँ, खींचਣ तू ਲਈ मुझे बैठा है. बता. How old were you when you left? I was in grade 8 when I left. And you came back after how many years? I think for 13 years I think. What did you observe? तूने क्या जो तू वापस आया था तो क्या तूने चेंज तूने क्या चीज कोई देखी है? Driving on the other side of the road. नहीं मुआशरा किस तरह नहीं, change हुआ भाई? मुआशरा। यार मुआशरा बहुत different है यार. मुआशरा बहुत different है. मुआशरा is like you come from एनर्जी क्या फील हुई थी तुझे? जाते हुए क्या था पाकिस्तान से? जाते हुए मैं बहुत इमोशनल था. I didn't know what I was stepping into. I didn't know what if I'm gonna like where I'm going. आते हुए मैं खुश था. But at the same, there are things that I love about Pakistan, bro. नहीं शावीर, For example, I love the fact that I can call this my home. I feel like I'm home. एक घर वाली फर्स्ट vibe क्लास आती है. सिटीजन हो ना, यहाँ पे फर्स्ट क्लास सिटीजन हो. सड़क पे कोई तुम्हें ये नहीं कह सकता ओए किथे आया, Exactly. गोरा कह वो सकता. एक होमली फीलिंग है, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस है. करेक्ट, सही है. लेकिन बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हैं. अगेन ओवरऑल फ्रॉड, झूठ, इनसिक्योरिटी, सेफ्टी इश्यूज, बहुत ज्यादा इस तरह की चीजें. यानी कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी वाइफ को एज एन एग्जांपल दे रहा था कि अगर हम अलफता जाते हैं, हम लोग निगोशिएट नहीं करते क्योंकि वहां पे प्राइस लिखी होती है, स्कैन होती है, आप पैसे दे देते हो. लेकिन अगर आप रेडी वाले के पास खड़े हुए हो तो आप 10 रुपए भी बचाने की कोशिश करोगे. क्यों? इट्स नॉट बिकॉज यू वांट टू सेव मनी. अच्छा, मैं नहीं बचाता. मैं बता मुझे एक घर वाले सेकंड, कहते हैं, एक सेकंड. I Let me I find it ridiculous. It's मुझे not लगता है because कि you want to भाई, save money. जिधर नाइकी पे आप ये पैसे खर्च कर रहे Exact. हो, वो रेडी Nike वाले के खाने भाई, पे आप जहाँ पे खाने पैसा कहाँ- कितना खर्च कर सकते हो? KFC को तो नहीं आप कहते कि Doesn't भाई matter. ये बर्गर महंगा है. हाँ. It is not because you want to save money. I don't believe that Yeah. to be true. It's I because think you don't it's consider because them human. no, it's because you don't want to be wronged. Wronged. You don't want Want to be somebody taken to advantage tell of, you a price is what that he's is saying. not the actual price. They look at your car and they tell you that this is अच्छा, आपको 200 rupees more than it really वो is. predatory pricing करते हैं ना. They look at how you are. आप and then they फ्रॉड से बचते हो. inflate the आप कहते हो prices. मुझे बेवकूफ मत बनाओ. हम्म. अगर आप महंगा फर्नीचर खरीदने जाते हो, आप निगोशिएट नहीं करोगे. अगर आप सस्ता फर्नीचर बनाने के लिए एक लकड़ी वाले को घर लेकर आते हो, आप हजार रुपए पे लड़ाई करोगे क्योंकि आपको पता है वो प्राइसेस इन्फ्लेट कर रहा है. एज अ ह्यूमन बीइंग you'll feel insulted कि अगर कोई बंदा तुझे बेवकूफ बना के तुझसे पैसे चार्ज कर ले. I think psychologically that's the reason. If I recall, if I've अगर मेरी तखान से I किसी think बात कुछ लोगों हुई की है, ये भी होती है कि it's the exact opposite of what you're saying, कि not to be wronged but to get a win over someone. इसने ये कहा था, मैंने मतलब इससे अगर मिला। अगर Say- तुझे so अगर किसी ने same कोई thing on quotation side of दी the हो, boat. ठीक है, तूने अभी घर किया है, अपार्टमेंट किया, सारा कुछ किया है, तुझे जब कोटेशंस आई हैं तो तू जब तरखान से निगोशिएट करता है तो तेरी क्या साइकी होती है? मेरी तो साइकी, क्योंकि मेरी साइकी के अंदर ये नहीं आता. यार मेरी Maybe what psyche you're होती है talking कि about अगर कोई is on a very Psychological, it's on- subconscious it's level. Subconscious level. Yes. नहीं मेरी मुझे psyche- लेकिन एक्चुअली ये फील होता है कि No, because if that was true, then you would also negotiate an al-fatah. Why wouldn't you do it? वहां पे प्राइसेस लिखी हुई है, अच्छा, यहाँ you पे do कोई know verbally ना बता that रहा है. we do this because we've seen our parents do this. No, हाँ, true. Whatever the cause यार if may it's be. on- basically if- अल्फता में आपको ये है कि you can regulate their pricing. Like you can go like every day there's a price tag.
So it is being regulated. Plus, it's a big brand, and the bro, government keeps a खाना check खुला नहीं मिल रहा on है the जिसको- prices. So you trust them. No, you trust the organizations that run these places. So you trust something that allows you to go and not negotiate. Yeah, but Right? on the sadak, On the sadak, you don't trust that guy. you don't basically वहाँ पे भी पता ना price list होती है. There's a government price list. So अगर लिस्ट होती है तो आप negotiate नहीं करते. क्या? अगर उन्होंने लिखा भी होता है ना कभी होती है लिस्ट, पता है, आप उनसे मांग सकते हो कि रेट लिस्ट दिखाओ. अच्छा यार. हर किसी को रेट लिस्ट मिलती है. डीप चले जाते हो. नहीं हर नहीं, topic लोकल में गवर्नमेंट सालों- देती है, असिस्टेंट कमिश्नर्स जारी करते हैं रेट लिस्ट ब्रो. हर रोज एक नई रेट लिस्ट जारी होती है, हफ्ते में एक दफा होती है, जो मंडी में जाके बटती है और सबके पास पड़ी होती है, ऊपर गवर्नमेंट की पर स्टैंप होती है. आप रेट लिस्ट देख सकते हो. मुझे लगता है कि यार लोग जो है ना पाकिस्तान के अंदर ये वैसे ही यार, इट्स पता ना, इट्स अ रिलीजियस कॉन्सेप्ट आल्सो. इट्स नॉट जस्ट सोसाइटल के बार्गेन करो, ये सुन्नत है. सो दैट्स व्हाई अ लॉट ऑफ पीपल आल्सो डू इट. बार्गेन मुझे बचपन में ये सिखाया मुझे गया तो कि नहीं बार्गेन, पता मैं कहता ऑकवर्ड लगता ना, तो वो कहते थे कि नहीं यार ये तो सुन्नत है बार्गेन करना. खैर पाकिस्तान में रिलीजियस रीजंस की वजह से मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की नहीं, चीज नहीं होती करते। होगी, लेकिन यार, It would surprise अच्छा me. मेरा सवाल I थोड़ा would सा जो surprise. रह गया, उसका जो सवाल था ना तुमने मिसरीड किया. तुम्हें चेंज क्या नजर आया पाकिस्तानी सोसाइटी में जाते हुए और फिर वापस आके उन 13 सालों में, 14 ओ सालों अच्छा में? उन 13 सालों में हम्म, यार मेरा ख्याल है लोग मैंने भूख नंग ज्यादा देखी. अब ज्यादा देखिए. मैंने ज्यादा देखी. शायद अब तुम परसीव बेहतर कर सकते हो. तब शायद इग्नोर करता है ना बच्चा, समझ नहीं हाँ, होती. बच्चे को तो नहीं, बच्चा तो हाँ. जिंदगी जी रहा होता है. Your biggest worry was your हाँ, तब तुम घर से midterm स्कूल exam. जाते हो. हाँ, घर से स्कूल जाते हो, स्कूल से घर homework आते हो. करना है, ये अब करना है, तुम that was फिरते हो. life. Yeah. मे बी मगर भूख ना कम हुई है. लोगों की एनर्जी का बता. Really? Come हाँ on. हाँ, economically feel? we've यार improved. वाइब प्रीटी मच सेम ही थी. यानी Yeah. कि मुझे वाइब में कोई इस तरह का खास डिफरेंस नहीं नजर आया. आई फेल्ट लाइक व्हाट आई लेफ्ट विद, आई केम बैक टू अ सिमिलर एनवायरनमेंट. आई फेल्ट लाइक माय फ्रेंड्स आर रिचर, दे मेक देयर ओन मनी नाउ. सो इन अ वे इट्स बेटर देन इट वाज बिफोर. अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है. Actually होता तो ये अल्लाह है. की कसम ब्रो, ये न्यूरल लिंक के बगैर टेलीपैथी हुई है, तुझे पता है. क्या? मैंने लिटरली दिमाग में सोचा है अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है. तूने उसी सेकंड अच्छा. बोला है ब्रो. क्रेजी. ये ऐसे मुल्कों में नेसेंट डेमोक्रेसीज और नेसेंट इकोनॉमीज में ऐसे ही होता है. मगर कुछ मिसालें हैं जिस तरह के बांग्लादेश. बांग्लादेश इज अ ग्रेट इकोनॉमिक मॉडल टू लर्न फ्रॉम. या ब्रो. ताइवान ग्रेट इकोनॉमिक मॉडल. इंडिया ने जो कर दिया भाई. सो ब्रो मसला ये हमारे इर्द गिर्द थे सब ये. तो पता है back in the 70s or back in the 60s or 70s, Pakistani economists went to Sri Lanka and gave them an economic model. And also created Emirates. When Emirates, Viya हाँ, asked for UAE, trained asked for Emirates, him. PIA trained Emirates. See, it's the same वो thing, अलग bro. बात है, श्रीलंका bankrupt हो गया. We will shit on पता ना श्रीलंका bankrupt I हो गया know. recently. we will लेकिन है shit बहुत on खूबसूरत, मैं people गया था around वहाँ us. अच्छा, I haven't been. Beautiful. Colombo is like I've next heard it's level. beautiful. हाथी तुम होती क्या देखी कह तुमने? रहे हो? हाथी क्या? होती साले मैंने श्रीलंका नहीं क्या हाथी Colombo होती. enjoy किया खास. उनका हाथी का गए थे सीन Colombo. नहीं है कोई. हाँ उनका सीन बहुत है, लेकिन इस तरह नहीं. मैं वो कह रहा ज़रार को था, नहीं अच्छा कहाँ पे लगा. हाथी देखो. जरार कह रहा है कोलंबो नहीं मैं अच्छा. आगे कैंडी वगैरह नहीं गया. I think मैं वो enjoy Candy करता. was but also really nice. Colombo, I think the best I was sushi I've just had like, was in why am I Candy. here, man? Best sushi you've had. Was in Candy. In Candy? Yep. That's crazy. Best. ever. 0.0001%. I take you to the candy shop. But anyways, अच्छा मुझे ये बताओ कि ये obviously एक सेकंड, ये it's not अच्छा good से to शुरू be. करते हैं, यार मैं ये- सुसु कर लूं. ओए परफ्यूम कौन सा यूज करते हो? You like what you hear? Huh? Smell? I don't smell anything. I'm just saying कुछ कि people ऊद है. would want to know ना, Shaveed Jaffrey कौन सा Oud परफ्यूम? shit है Do कोई. you guys know about the Shah Rukh Khan perfume that went out of stock? He said I used नहीं, Diptyque क्या है? and फ्रेंच सा नाम है कोई. Diptyque. Diptyque and Diptyque. he Diptyque. mixes it with Dunhill. हाँ. Dunhill का कोई Cigarette. cologne है. All सुट्टे के अंदर. इनको नहीं चाहिए Neuralink. हमें नहीं चाहिए Sick. Neuralink. But हाँ मैंने ये पढ़ा था. वो क्या शाहरुख ने रिवील किया और बस बिक गया सारा. Out of stock, prices jacked up. इसलिए तो मैं भी रिवील नहीं करता. Same. Same. नहीं बट बताओ ना क्या है. कंपनी ने डिसकंटिन्यू कर देना. It's a good. Axe. Like, Yeah, people would actually, want to know. I Axe chocolate. I also mix colognes and I mix 3.
You यार mix ये three. मिक्सिंग नहीं मैंने I अभी तक mixed- शुरू यार मैं तुम करता लोग हूँ मिक्सिंग mix. ब्रो मैंने अभी मिक्सिंग शुरू इज किया. the game. guys Game है. mixing is the game. That's how you actually एक दिन make ना a smell दानियाल your मुझे own. मिला दानियाल कहता है ब्रो मैं आजकल ना परफ्यूम्स बड़ा घुस रहा हूँ फिर इसने मुझे 20 मिनट का लेक्चर दिया कि अगर आप ये वाला मिक्स करो ना इस वाले से मैं ऊद मैंने डिस्कवर किया है ऊद को आप ऐसे कर लो तो अच्छा। ओए ये ब्रो ये मैंने सारी चीजें सीखी है हमजा से हाँ, हमजा वो से और तो मेरे बड़ा शौक कजन है उसे. अब्दुल्ला से By ब्रो the way, boys, तुम ये लोग तुझे सेकंड नोट एंड लास्ट नोट वाली वोकैबुलरी पता है परफ्यूम्स की नहीं ये मुझे इतना नहीं नहीं पता पता। यही कि मतलब मैंने बेसिक ना आई हेट ऊद ठीक है लेकिन अनफॉर्चुनेटली इफ यू डोंट हैव ऊद ऑन यू तो उसकी ना जो मतलब लॉन्जेविटी होती है ना और जो इंटेंसिटी है कोई ऊद वाला बंदा कमरे में आएगा ना ऑल अटेंशन इज गोना गो टू देम सो मैंने कहा यार ये क्या फ्लो है यार थोड़ा सा ऊद लेके आना पड़ेगा मेरे कजन ने फिर मुझे एक तरीका बताया उसने कहा वो मसला ये होता है कि तुम्हारा एंडिंग नोट नहीं होना चाहिए ऊद का मैंने कहा एंडिंग नोट क्या है उसने कहा वो तुम फर्स्ट नोट लगाओगे ऊद का और तुम्हारा लास्ट नोट जो होगा वो किसी आइसी परफ्यूम का होगा so you mix it so the oud stays and the longevity is also there but it gets neutralized by that icy stuff that you like and that also like people you know like take notice of तो कपड़ों पे उसने कहा था कि ऊद लगा ले बेशक ज्यादा but like you know just like around the neck behind the ears maybe like over here you put the oud first and then the icy shit coat it so the second note's no going to so be you that put it on the same spot that you put the oud या फिर आप ऊद एक जगह पे लगा दो दूसरा कहीं नहीं बेसिकली अगर तूने फर्ज कर ये है ना तूने यहाँ पे ऊद लगाया है ठीक है तो तूने यहाँ पे दूसरा लगाया है और फिर उनको बेसिकली Mix करती है basically. या यार I also mix clones लेकिन ये नोट वाली बात अब मेरे ये दिमाग फर्स्ट में आई नोट है। सेकंड First, नोट second वाली वाली बात चीजें- मुझे नहीं पता मुझे था अच्छा, कि मैं वो तो मिक्स हो सीधा- जाते तो मिक्स दो परफ्यूम मुझे भी यही था ब्रो बस अच्छा वो मैं taste बड़ा बना बेसिक आदमी हूँ मैंने बस एक रील देखी कि कौन सा परफ्यूम लगाना चाहिए तो उसमें लिखा हुआ कि अगर ये परफ्यूम लगाओ तो बच्चियां पागल हो जाएंगी वो था डॉल्चे एंड गबाना द वन मैंने वो खरीद लिया उसके बाद कह रहा है तुझे उसने मिलियनेयर हाँ नहीं अच्छा उसके बाद फिर मैंने देखा कि ना टस्कन लेदर टॉम फोर्ड का बड़ा अच्छा है फिर मैंने वो ले लिया टस्कन लेदर इज पॉपुलर फिर मैं मिक्स करके ना अब लगाता हूँ बस ये मेरा टोटल बहुत आला। गेम ही है अच्छा, तूने actually, मुझे दिया अगर- था मॉन्ट ब्लांक का वो Black काले and- वाला गेम हाँ ये Love गेम Very good. ये yeah नया वर्ड बनाया that I became my discovered new everyday one. perfume I discovered new one. It's गेम Thomas Kosmala number 4. It's literally the क्या best shit कश्माला I've ever. क्या Thomas Kosmala. अच्छा थॉमस कश्माला Kosmala. शबीर सोच रहे हैं मैं सब काट दूंगा ये बाद राज में। भी उसी के साथ है। मुस्तफा ये सब कटेगा ठीक है? क्यों कटेगा मुस्तफा बस कटेगा। मुस्तफा आई अच्छा। डोंट वांट यू टू कट दिस अच्छा Please यार keep it. वापस आओ बॉयज। हाँ। बताओ किस तरह शुगल किस तरह लगा? ये इससे बेहतर हम शुगर लोगों ने लग ही नहीं डिसाइड सकता किया था कि हम Bro, लोग तुम्हें ना पता है- शुगल पे एंड अच्छा सुनो बेस्ट फॉर्म हम ऑफ लोगों ने पाकिस्तान के बारे में कुछ 40 मिनट बात की है सुनो बड़ा मजा है यार बेस्ट फॉर्म ऑफ तुमने जोक्स मुझे डिप्रेस कर दिया। पहले तुम मुझे खुश करो। खुश करूं नाचो। इधर आओ जरा। यार कैमरे बंद नाचो, 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 इधर आओ, नाचो। चीज़ दिखाओ। नाचो। बेस्ट फॉर्म ऑफ कॉमेडी ले सेल्फ लो। जोक्स ब्रो अपना मजाक उड़ाओ ब्रो उड़ाओ। तो उड़ा तो रहे थे वुल्फ Go क्रू for it. तो वो तुमने उड़ा दी ना अब हम Do you- मजाक उड़ाते हैं लेट्स गेट कुकिंग का नहीं एक सेकंड। ये पता सारी डिशें Do you- बना के खुद नहीं Do you खाता not कि मोटा ना know हो that you are also part of the wolf crew? मी हाँ। यार I was just हाँ, gonna ask this इसलिए तो मजाक question. उड़ा रहे हैं। I want to know This that I am- was bro, the I one of will- वो the current first कह रहा है people कि in we are- Pakistan who- मैं तो कह रहा हूँ मैं अभी भी हूँ हाँ तो फिर तो कांट आई मेक फन ऑफ माई सेल्फ अब तो please हम do. वापस आ गए हैं ब्रो हाँ, अच्छा What would you अच्छा change? इस परफ्यूम में मेरे जीन्स भी हैं what would you change about Wolf Crew? What would I change about Yeah. Wolf Crew? The leader, the pack leader, the wolf, the wolf the himself. wolf himself. पीछे सिर्फ क्रू कर रह जाएगा अच्छा नहीं बट वुल्फ क्रू अच्छा वैसे ये आर्ग्यू ये करते हैं यार हाँ कि करो। तुमने हम पहले डिस्कस करेंगे कि डैनी के म्यूजिक करियर के बारे में क्या चेंज करेंगे वुल्फ क्रू के बारे में क्या चेंज करेंगे जरार का हम देखेंगे लेट्स गेट कुकिंग के बारे में क्या चेंज करेंगे और तेरे ड्रामों के तुम्हारा ड्रामों का मेरे acting. ड्रामा मैं अच्छा कंटेंट क्रिएटर भी चलो मेरे ड्रामा ड्रामो क्या यार चेंज that's what you get. ठीक Okay. ओके Danny का music. I think Give Danny it to should me. stop. No, I'm joking. अच्छा मैं ना नहीं, वैसे डैनी ये के बहुत मैं fit बताता हूँ था. मैं This is अगर gonna be मैं tough one to अगर हाँ. मैं नहीं मैं शुगर लगाना नहीं मैं यार, सीरियस बता one liner, तुम serious one बता liner, रहे हो? one liners One-liner. हैं ये. हम हम्म. डिबेट नहीं कर रहे. अच्छा मैं यार- डैनी की म्यूजिक के बारे में ये चेंज करूंगा कि मैं चाहूंगा कि डैनी के गाने एक्चुअली रिलीज हुआ करें इंटरेस्टिंग 1 month release after I listened to them, not 3 years.
मैं डैनी के गानों के बारे में चेंज करना चाहूंगा. Pop pop get litty, अभी swimming fresh the cool, ये इस तरह के जो अंग्रेजी आ जाती ना, हाँ. not so thick shit. ये Like Danny living in Pakistan but singing for हाँ, California. मतलब I'd want the more उड़ चलिए is out from him. Same. And I think I agree with वो चाहिए मुझे. more with that. शबीर के वुल्फ क्रू के बारे में मैं चेंज करना चाहूंगा. इसकी डिक्टेटरशिप. I'd want to change the dictatorship element of it. यार इसके वुल्फ क्रू के बारे में क्या चेंज हो सकता है? आई फील लाइक के समटाइम्स मुझे लगता था कि क्रिएटिविटी ज्यादा आ सकती है. So you're basically एक्सप्लोर मोर. Venture further. venture out. बताओ. No, yeah, I think I would want you to take in people who are better than you. Oh, that's great advice. जैसे कि ज़ैद अली टी. उसको join करा ले. नहीं, he has taken people who are better than him. Me. नहीं यार. Alright. खाकान के ड्रामों के बारे में आप क्या चाहिए? Let's go यार. Murder me. हाँ जी. His privilege. ड्रामों की बात हो रही है, रियल लाइफ ड्रामों की नहीं बात हो रही. Wow, man. इसके ड्रामों की आई थिंक ड्रामे इतना वो कह नहीं सकते क्योंकि मेरा प्रोडक्ट नहीं है. हाँ नहीं समझ fair रहे हो? enough. Acting चलो. एक्टिंग कह सकते. हाँ, that is mine. I think I think he hasn't seen my acting. Also. no, I have. सुकून देखा. I think I हाँ, would मैंने काफी देखी है, but जितनी I मैंने would देखी है take ना, you out of your acting. But yeah. सकून Change में the face. बहुत तूने एक लीप लिया. मैंने हाँ, उसकी clip because वो देखी थी. हाँ. Okay, I get it. I would take So- a. But I think that's something that all of us have been navigating. Working towards also. Yeah. Yes, I Because think ये हाँ. मेरी अपनी भी problem है. बेसिकली तुमने कहा है कि थोड़ी तुम्हें एक्टिंग और सीखने की जरूरत है ताकि तुम्हारी अपनी पर्सनालिटी कैरेक्टर्स में इतनी नजर ना आए. या फिर तुम कैरेक्टर्स ऐसे अब वो तुम्हारी चॉइस नहीं है No, no, क्योंकि सही तुम्हें कह जो रहे हो. ऑफर होता है वो बिकॉज ये भी No, थोड़ा सा मसला है मैं क्योंकि ऑल इतना अच्छा- कैरेक्टर्स आर ऑफन द सेम Yeah, see, but एंड पीपल विल ऑलवेज ऑफर यू कैरेक्टर्स दैट आर मोस्ट लाइक यू. मुझे एक और चीज लगती कि यार मैं ना एक इन्फ्लुएंसर से सीधा एक्टर बन गया हूँ. तो लर्निंग द क्राफ्ट ना आई हैव बीन डूइंग इट ऑन द जॉब. तो अभी जितनी मेरी चीजें आई है ना वो सब में मैं बड़ा नूब था और अभी भी हूँ नूब. But yes, I am learning and I am actually following what you've said and what you're saying. He said to me a year ago. You हाँ said जी to me. बताएं. I क्या think change I करना? would change like some maybe some like preconceived nuances of like emoting Bollywood emoting within you. Okay. Yeah. Like Like overact. You're basically calling him an overactor. no. I'm saying that there's a line, you read it, and because you've seen a particular style of acting, you think that's how you need to say it. But you don't need to say it like that. You need to normalize it a little more. I would say like normalize your lines a little more. That's Okay. it. So, Yeah. I get like make it more subtle. Like I get what you're I saying. think he means more real life. Yeah. Have you seen have my it your acting? own- give it your own pace and your own ये बात मुझे nuance. दानिश भाई ने ऑन सेट समझाई थी. दानिश नवाज ने जब अच्छा. अभी मैं जाफा के सेट पे गया था उन्होंने कहा था कि तुम ने एक्टिंग नहीं करनी. अपना आप रहना. तुमने बस बोलना है. हाँ, बस बोलना. तुमने ये नहीं कहना कि यार तुम्हें क्या मसला है. तुमने कहना है यार तुम्हें क्या मसला हाँ. हाँ. मुझे याद है मैंने अपना पहला ताना बाना का सीन देखा. मैंने कहा लानत है इस बंदे के ऊपर. ये मैंने क्या एक्टिंग की है. शुक्र है लानत ही का दिया. Bro मैं तुम्हें बताता हूँ मैंने रुक नहीं गए दरम्यान में. खाकान की एक्टिंग मैंने खाली एक जगह देखी है वो है 12वां खिलाड़ी. अबे यार. और वो तब तो आती नहीं वो थी. रियल लाइफ देखी थी एक किस्म की. और मैंने कहा यार like I thought he was a better actor. He's actually not good. Then I actually watched 12वां खिलाड़ी and I realized that even I acted. I thought I was amazing. I thought he was amazing. When we used to have like these fighting scenes, I thought all of us was amazing. But when I actually saw the finished product, I was like, shit, we actually know nothing about acting and we are still Yeah. Yeah. नहीं but Danny के we're I would say creating there the were some product. really good scenes. हाँ, in some that. रोने scenes वाला were very इसका good. सीन एक्चुअली बहुत मजे. वो तो Yeah. ऑन सेट मुझे याद है कि जैसे इसने खत्म किया था इसको एक पूरा Yeah. अप्लॉज दिया था. Standing ovation. फट गई थी. अच्छा हमारी. जी आपकी सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन. जरा Let's की. get cooking.
The pan के chose. बारे के अंदर यार तेरा कल कमेंट कितना फिट था मुझे साद ने बताया कहता तूने कमेंट पढ़ा मैंने कहा नहीं फनी लगा कहता था bro. दानियाल ने इसकी वीडियो के नीचे कमेंट किया कि पैन आगे वो स्टार 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 मैं वीडियो में कहता हूँ कि and the pan chose this dish to me. क्योंकि वो एक pan ने choose किया. Bro, you need to hear the way he said it, bro. क्योंकि मैं पहले सुन रहा और मैंने कहा ओए ये क्या हुआ? पैन chose the pizza. पैन chose the pizza. आज की रेसिपी हमारे लिए ब्रोसो के स्पिन द पैन चैलेंज ने चूज की थी एंड द पैन चोज और ये मैंने एक दफा भी नहीं नोटिस किया. पैन chose And the pan chose. इसने कमेंट किया पैन वो करके क्रॉस पैन chose. Good यार ज़रात. या बट सीरियसली इसे क्या चेंज करने की जरूरत है? I think the sing-song way you say things, but that's just me. Maybe his content I like it. demands. I that like it. वो content It's very, you know, it's very sing-song. I would say I think USP. मुझे YouTube पे आने की जरूरत है. I would change your overall interest in your consistency. I 100%. would focus more on this and less on TV if I were you. अच्छा I would want you to do it more like you do it. I think you are a much more I think you are a much more lovable personality in real life and that doesn't really translate onto social media. I think I think somebody I think नहीं, it but does. पता है, that's something that can be It does, said it about does. all of us. that's also On true. social media, you are someone else, bro. You're हम आपस में जो होते हैं ना, हम फर्क होते हैं. Yeah. Even right now on the podcast, we're 90% ourselves, but that 10% is still the pan chose is the missing. pan chose is missing. Zarar gives a very homely, very like I know this guy vibe because he's very warm in his panchos. But bro, he's also like he has this You know energy what I mean? where all friends of mine who are girls, they're always like, bro, like Yeah. who's What's your- going on with this guy? Yeah. Like, kya scene And the hai thing iska? is, he takes full I'm advantage like of that. fan chose, yaar. Yet I've never found out about these girls. बहुत आला. झूठा बोल you know all about these girls. नहीं दानियाल उनको कहते नहीं यार ये इसको लड़कियां नहीं पसंद ताकि वो जाए ना इसके पास. Panchos, yeah. तू कह रहा है कि focus on The this. pan chose it. Yeah, focus on it more. I think I Get more would. consistent with it. I'm doing TV now and I would like to do it, but I feel like this is something that I don't want to stop. Yeah, focus more on it. I want to really grow this. I want to have the first show on a digital streaming platform on Jahan pe either pan Netflix choose- or Prime or whatever. Oh, Whatever food the show first from. I want to wala. be that Pakistani. Yeah. Yeah, Like so you Chef gotta grow your Chef social Z. media first. 100%. So you gotta be very, 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 very consistently active. But anyways, I need to learn how to be a host. you are one. You're a co-host. जो बात है. Be the Hosting host. seat for the So after he Host, kills me, ghost. after he takes the wolf out of the wolf crew, you can become the host. फिर क्या dog crew हो जाएगा? Dog crew. अबे तू आ रहा है हेड भाई. नहीं. फिर फॉक्स क्रू हो जाएगा फॉक्स ये. क्रू. But anyways, boys, I think let's end the podcast again. Very good sitting, boys. It's always fun having conversation with the Laundas because I think vibe थोड़ी मजे की है. Lana. Different. But ये And yeah, don't forget, don't sing again. Not so thick, she. All right, yo guys, always a pleasure. ये हाथ Launda हम सारे Talk. उधर भी एक जोड़ लो. सेकंड रुक जा. हम साथ साथ Nee. And we're the 3-4 best friends that anybody could have. We're the 4 best friends that anybody could have. You're the Everybody, Good see that. thank you so much for watching the Launda Talk Honest Hour. Guys, thank you so much for joining. As always, this is episode number 5. It was fun as always. I hope I see you guys next month again. We promise that we're going to do this every month. मैं बड़ा right? खुश We हुआ promise? महीने बाद शक्ल Good देखूंगा यार, good यार. Please आ जाना दोबारा boys time से. आप लोग भी आ जाना time से. दोबारा देखना मत भूलिएगा. Subscribe if you haven't already. And we will as always catch you in the... Next episode. Love you all. Peace out. Bye.